my teenage years, I had a lot of hormonal issues, like most teenagers do, right? Like I had body hair, I had acne, so my skin color was a bit darker, which is a situation in India. And, I had to have like old relatives tell me, oh, in Hindi, itni savli ho gayi hai, itni kali ho gayi hai, itni lambi hai, shadi kaun karega, kya log kahenge type of situation. And then you're prepped since you're younger to be good enough to get married to, pretty enough to get married to. A lot of girls even get educated, so it's like on their CV for like a marriage CV. So like everything is like prepped for you to be desirable. Hi, Anam, how are you? I'm good, Rachana. How are you and your glasses, red glasses today? Yes, And ma'am. we are just ready for bashing up Bollywood. Bilkul. Absolutely. How is life? Yeah, good. It's good. It's good. And I'm just not stopping for till 14th now. Like we have to keep rowing because the date is coming closer, and we already had Disha's death anniversary, so we have to keep on rowing for Sushant, and because he has opened up other cases as well, that we're going to give justice to all other people who have been shown as suicide, but it's there's another story behind story behind it. So we have to fight not just for him, for everyone who has gone in injustice way. So we are keep rowing on the to Twitter. I'm not gonna stop, and I will hope that if I'm able to go on the 14th, there's a protest around my area as well, and so on the 14th, so That's we have awesome. to keep, yeah, so we have to keep rowing everywhere so that the CBI knows that we need to have a closure for the case. So we just hope that some media people get informed on the 14th itself, so that these authorities get to know that there are so many people asking for justice, and someone's prayers will come true. So I believe the more people we get, the more better it is, and we get closer to justice. So that's all I have to say. Thank you very much, Rachna, and I hope you enjoy your session. Thank you so much, Anand. Thank you. Thank you so much for standing in solidarity with Sushant. Thank you. Um, yeah, just June 14th is just a very terrible milestone, but something that we cannot stop raising our voice for. So, Yeah, thank you. because it's Appreciate it. and if you be funny enough, it's the a day before my birthday as well. Yeah, I So remember. so on the 15th, and so I always in had to be in this movement. I always wanted to be doing something because I saw that he's gone in the injustice way. So I'm always in this movement because I wanted to do something for him, and so this is my way of showing my solidarity. Thank you very much. Okay. Thank you, Anand. Thank you. Preeti, how are you, ma'am? Hey, hi, how are you? थैंक यू हमारे संवाददाता बनने के लिए, अप्रिशिएट दैट. Oh, आपका न्यूज सेगमेंट बहुत जल्द आएगा. यार इतने शॉर्टकट्स लिखती हो तुम बीएफएफ में, तो उसका मीनिंग ही नहीं समझ में आता मुझे. तो Oh, BFF. Oh, I'm sorry. सॉरी, आई एम वेरी ओल्डी पर्सन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस शॉर्टकट वर्ड्स. चल झूठी. Okay. So, कुछ लोग तो बोल रहे हैं जैसे आर्यन खान ड्रेस केस में वैसे सुशांत केस में एक्सप्रेस लाइफ टाइम चल रहा है. देखो हमारे आगे फेवरेट्स. अरे I सबसे know. पहले जो आपने मैडम जी का इंटरव्यू दिखाया था, मैं तो उसी पे ही बोलने वाली थी. Yeah, please. फॉर द अदर पर्सन टू फिनिश. नहीं, प्लीज. इसके बारे में तो इनके हमारी बारे में वर्बल. जैसा ये अभी इंटरव्यू में बोल रही हैं, सबसे पहले तो वहीं से शुरू हो जाती हूँ. जो ये कह रही हैं, ये जो बोल रही हैं कि इतना इनको प्रिपेयर करना पड़ता है लड़कियों को अपने आप को दिखाने के लिए, और इनको कोई काला बोलता था, मोटा बोलता था. यू आर अ सो हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन. उसकी हेडस्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इतना पैसा और इतना शोहरत है इनके घर में कि इन्हें कोई दबा नहीं सकता. ये तो क्लियर है. हम जैसे लोग दब जाते हैं, इनके जैसे लोग को कोई दबा नहीं सकता कि जी ये पतली हैं या लंबी हैं या काली हैं तो इनकी शादी नहीं होगी. ये तो हो ही नहीं सकता. आपको इतना पतला होने की ज़रूरत क्या थी फिर? आपको अपना अगर वो दिखाना था अपना टैलेंट, तो आप अपने मोटापे में भी दिखा सकती थी. आप 0 साइज क्यों हुई? Exactly.
आप इतनी गोरी क्यों हुई? जब आप काली थी तो काली रहती, आपको किसने शादी, आप नहीं करती शादी, आप अपने स्टैंड पे खड़ी रहती ना। तो आप गोरी हो गई, आप 0 साइज फिगर हो गई, तो यहीं आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। आप 0 साइज हुई क्यों पिक्चरों के लिए? आप कहती मुझे मेरा टैलेंट दिखाना है, लेकिन मैं ऐसे ही अपने फैट में ही दिखाऊंगी। तब आप समझ में आता कि आप ये लड़कियों की साइड है। यू डोंट मीन इट व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि आपने भी वही किया पिक्चरों में आने के लिए, गोरे हो गए, 0 साइज हो गए, शुगर फ्री छोड़ दिए। तो दिस इज हाउ यू शो योर टैलेंट, विथ योर बॉडी एंड योर स्किन कलर, नॉट विथ योर टैलेंट। टैलेंट तो छोड़िए, कंटेंट बहुत ज्यादा है दीदियों में आजकल। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, सेल ऑफ के लिए इनका ये सब मायने रखते हैं, और फिर ये भाषण देती हैं कि लड़कियों को कितना प्रेशर होता है लाइफ में। ये दिख रही है, देखो कितना प्रेशर है इनके ऊपर, देखो। स्पेंडिंग हर फैबुलस बेबी मून विथ हब्स। हब्स तो मुझे समझ ही नहीं आते इनके, कि ये कौन सा नौकरी और कौन सा बिजनेस करते हैं जो इन्हीं के साथ घूमते रहते हैं जब देखो। इनके हब्स तो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। मैं तो अपने ही हब्स से कंप्लेन करती हूँ कि व्हाई आर यू लाइक दिस। अनुजी सीरियसली, इसके देख के मूवीज, इसके ये रील्स या व्हाटएवर, ओके, ये इतने अदाएं दिखा रही है, वो ऐसे ऐसे करके, ये मतलब सब वीडियोस में आपको, मैं टोटली यकीन रखती हूँ इस बात पे कि जितना लोग अपना प्यार शो ऑफ करते हैं ना वो सोशल मीडिया पर, वो उतने ही अकेले होते हैं जिंदगी में। इतने इनसिक्योर होते हैं ना ये लोग, कि इतना शो ऑफ करेंगे, पुच्ची करेंगे, हग्गी करेंगे, सब इनको सोशल मीडिया पे ही करना है। राज कुंद्रा वाला इतने बिजनेस, इनसिक्योर हैं अपनी जिंदगी में। राज कुंद्रा वाला बिजनेस है। हाँ, वही उन्हीं के ही हैं टाइकून सारे। So here, if you see, you can, as you can see, बहुत सारा content है दीदी के पास, तो she has also become a digital creator, as you can see, like me. यार, ये आपके पर्सनल मेमोरीज है, आपको दुनिया में शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? I just feel so sorry for the child, light exposure, radiation, मतलब क्या कुछ नहीं होता है यार. And on top of that, the kind of dress that she's wearing, she'll probably never ever again wear it ever in her life. And I don't know, should I feel happy कि किसी को कुछ रोज, मतलब क्या बोलते हैं वो, they are getting some money to stitch all these clothes and थोड़ा employment मिल रहा है, तो should I just be happy कि just feel sorry कि दीदी doesn't have anything better to do in life? तो यार प्लीज, अगर इसे एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे ना, तो फिर कल को तो ऐसे तो कोई लड़की बेच रहा होगा, उसके लिए भी वो एम्प्लॉयमेंट ही होगा। हर चीज का आंसर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता यार। I know, that is true. But what there is no, like, 4-5 फैन तो मतलब यहाँ पे है, और नीचे से भी फैन होगा, कल कोई मार्लिन मनरो का पोज करेगा, कुछ करेगा, क्या है ये? आप करो यार, करो, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करो, पर इसको पिक्चरों को डालने की जरूरत नहीं है। ये आपकी पर्सनल मेमोरीज हैं, हमें नहीं देखना इन चीजों को कि आप क्या कर रही हो, कि कहाँ तुम्हारे डार्क सर्कल आ गए हैं, कि क्या बेवकूफी है। So ये देख के last week I was so shocked. I was like, beautiful mom to be Sonam Kapoor. ये कहाँ से क्या ब्यूटीफुल होंगी, कहाँ अपने में से होंगी। isn't she looking different? मतलब I thought कि विदाउट मेकअप होंगी, बाल भी सफेद फील आ रहे हैं मेरे को तो। Oh, I didn't mean to यार, ये सीटी बजता क्यों है यार, एक सेकंड यार. So sorry, I'm just okay. So यहाँ पे this don't know what she is. So this is without makeup. I thought this was like after her surgery or something like that. I feel like that. I'm not sure, but I feel like that she's just normal skin है. Makes sense. Makes sense. आयुष का एक कमेंट देखिए, बॉलीवुड किड्स में टैलेंट नहीं, टॉयलेट. Totally agree, आयुष. कारण हिट हुआ है. आई नो, नीरजा एयर होस्टेस ट्रिब्यूट के वजह से. एब्सोल्युटली. पापा की परी तो फ्लॉप है. एब्सोल्युटली प्रणव कुमार जी.
Yeah, she's just totally wannabe यार. मतलब just feel sorry she's spending her time like this. कुछ भी. Oh भाई साहब इसका बर्थडे है. Oh फोरा. और किसी है और का भी बर्थडे था याद है? हाँ अभी तो तुम्हारा भी तो था अभी 2 दिन ओ पहले। मेरा था क्या? इसी तब वजह वहीं से से तो हमने याद करना चालू किया था 7 तारीख से ही। कहाँ है फेकू, कहाँ है फेकू? अच्छा तो ये था मेरा वो फेकू का 7th बर्थडे, 7th जून। ट्रैश बैग स्टोरी वहीं से शुरू हुई थी फेकू, 7th जून से। ऑफ कोर्स पूरा इनसे इनका पर्स दुनिया भी नहीं बदल उठता गया. है, आप ये देखिए पीछे। दुनिया बदल गया. हाँ आई नो. वो बैग उठाने वाला एक पब्लिक और दीदी का ये बैग एंड फोन। यूएस में एक ट्रैश बैग मिलता है. When I actually use it, it exactly looks like this. मतलब I was just so surprised कि ये दीदी का ये कौन है जो फैशन डिजाइनर है जो इतना कमाल का वो ड्रेस इसको पहनाया. उनके तो वैसे भी कपड़े अलग ही रहते हैं। ओह यार. ओके क्वीन बर्थडे डिनर पे. ओके कितनों के करियर बनाने वाली एक क्वीन. She's so अमीर. What? She's so अमीर yet she wears these wedges always. Oh, why don't she invest in other brands comfortable wedges too? ये कौन है यार? पल्लवी त्यागी anchor. Zero fashion styling sense. What is she wearing? हैप्पी बर्थडे एकता. किस इमोजी? केक इमोजी. केक का स्लाइस इमोजी. केक इमोजी. ये क्या है? चॉकलेट बार इमोजी. अभी तो विकास गुप्ता के साथ एक शो में अभी एक कहीं इंटरव्यू में बोल भी रही थी ना, ही इज माय बॉयफ्रेंड, आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग पर्सनल। विकास गुप्ता एक सेकंड इसके होटल के कौन बारे सा में. तो इंटरव्यू था, आई डिडंट सेंड यू बिकॉज़ आई थॉट मे बी यू हैव इट। विकास गुप्ता तो बच्चा लग रहा है यार. ये कौन है? अभी रिसेंटली किसी उसमें अभी या तो मजाक कर रही थी पर उसके Yuck. साथ में बोल रही थी कि आई डोंट वांट टू डिस्कस माय लव लाइफ राइट नाउ बिकॉज़ आंटी इज 50 years old, right? आंटी का एज क्या है? एज तो मैटर ही नहीं करता यार आजकल तो कुछ भी एज तो जस्ट अ नंबर. It's just a number. I know. 6 become 9, 9 become 6. I know. Oh my god. Oh, so इसकी of course इसकी बर्थडे थी. Okay. Makes sense now. Because ये इसका फैशन देख के यार ये चलो आ जाओ प्लीज. रानी मुखर्जी दीदी का फैशन. ये सब लोग ट्रैश बैग ये गार्बेज बैग लेके घूम क्यों रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है. एंड व्हाई इज रानी मुखर्जी लुकिंग सो डिफरेंट यार? ये क्या है? No, definitely face पे काफी कुछ किया हुआ है. कुछ Her तो- face is totally changed. I know. I was not able to even recognize. ये Hmm. कौन है ये दीदी? I was like, and then I had to look at Rani Mukherjee Nose updates. and cheeks वगैरह बिल्कुल change है. Yeah. आजकल ये फैशन चल रहा है वो पूरा प्रेगनेंसी garbage की bag. ये पोस्ट प्रेगनेंसी सर्जरीज है. अभी आएंगी फैशन में. इस oh my gosh, she was pregnant क्या? एज अभी नहीं आई थिंक माइलेज. 2-3 years का बेबी है शायद ना. आयुष इज ऑन अ रोल. एज नहीं माइलेज है. So here, so ये ट्रैश बैग वाला ट्रेंड ऑब्वियसली मैं ही शुरू ये की उसके बाद आया ना करण जौहर की पार्टी के बाद. करण जौहर ग्लिटर ग्लिटर एंड सब दीदियां ऐसे ये अभी आईफा में भी इन लोगों ने सब ग्लिटर ही पहना था. आई सेंड यू सेम ही पहना था क्या? इसकी जैकलीन की भी पिक्चर भेजी थी मैंने आपको. सो दिस ये शी इज ऑलवेज बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड है यार. काजोल इज लाइक इतना ट्राई करती है बेचारी. दिस फील सो सॉरी. इसका ड्रेस फैशन बनता है और बगल वाली तो TMC मुझे लग रहा है कि बिल्कुल कम्पीट कर रही है माइकल जैक्सन से धीरे-धीरे. कितना सर्जरी कितना बोटॉक्स डालेगी पता नहीं. यार इसका तो कंपटीशन ये दीदी के साथ होगा ना. ये क्या है? ये तो मैं भी सोच के हैरान थी. ये लोग जब बोलते हैं ना लड़कियों को प्रेशर, ये देखो प्रेशर देखो. गोरी भी हो गई, पतली भी हो गई और ठीक ठाक कंटेंट भी आ गया. हाँ वो तो आना ही है ना. इंस्टा पे फॉलो इतने पापा ने दिला रखे हैं.
ये मुझे इसको देख के सबसे पहला चेहरा किसका याद आया पता है? वो क्या नाम है उसका, धोनी वाली वो हीरोइन, पहली वाली, और टाइगर की हीरोइन, दिशा पटानी। हाँ जो भी है, कौन सी भी पट्टी पट्टी जो भी है वो, मुझे उसका चेहरा ही एकदम से वही याद आ गया। नहीं, मेरे को she is looking like some alien बच्ची बेचारी। I just बट feel so कितना sorry. जल्दी पतले हो जाते, गोरे हो जाते, पता नहीं क्या करते। She used to look like decent थी, मतलब good looking, but अभी तो कितना। प्रियदर्शिनी काटोले जी, वेलकम वेलकम मैम। 3 बॉम्ब वाला स्टार्स फॉर यू टू, थैंक यू। कितना टाइम हो गया आप लोग, कितना टाइम है आप लोगों के पास? बहुत टाइम। सोनू जी वेलकम मैम, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। ओके, ऑल बुढ़ीस, आई नो आई नो। ऐसा सोई मत जितनी कहिए पतली, प्रियदर्शनी जी, अभी तो बचपन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। आई नो। ये तो कार्टून लग रहा है। आई नो, शी एग्जैक्टली अनुज, शी जस्ट समथिंग रॉन्ग, पता नहीं क्या है। रॉन्ग बट नहीं है, दे आर ब्रिंगिंग द बिजनेस इन इंडिया जीरो फिगर। और जीरो फिगर। अपना सर्जरीज, लेपोसेक्शंस में अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, देखा था ना आपने? दीज पीपल या ब्रिंग द बिजनेस, इतने पतले एग्जैक्टली। हो के। एंड रवीना दीदी का भी, सब लोग ये ग्लिटर विटर पता नहीं, बट ये इतना अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, पूरा टाइट्स वाइट्स अंदर में पहन के। ये जो भैया की पार्टी का है ना, हाँ, सबको कोविड आ गया शायद उसके बाद। सो बट ये आंटीज का फैशन ऐसा है, तो अंकल्स का फैशन कुछ ऐसा है। ये तो अभी हमको इनको नंगा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अपने आप में नंगे घूमते हैं। So yeah, just feeling sorry यार, ये they're just following the suit of their parents and there's just no hope, अभी आएंगे absolutely इनके no. पीछे पीछे और भी बच्चे तैयार हो रहे होंगे। अभी I तो know, काफी लोगों के हैं, अजय देवगन के है, बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं अभी बड़े बड़े पीछे। बहुत ज्यादा। तो बहुत मोटी लग रही है कैसे। केडी जनरल जी वेलकम से। सो कूल टू बी हियर। क्या आपने देखा होगा केजो की पार्टी में इवन जूही चावला का बेटा भी आया था। आई नेवर सीन हिम लाइक दैट, बट ही इज कमिंग टू पार्टीज नाउडेज। तो किसका बेटा? जूही चावला का। ओह माय गॉड। हाँ, तो अब धीरे धीरे कुछ है। जब ये लोग पार्टीज में आना स्टार्ट कर देते हैं ना, इट मीन्स कि या चालू हो गया है एक्सपोजर। एग्जैक्टली क्योंकि पहले एग्जैक्टली। कभी नहीं देखा मैंने पार्टीज में, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हिम। ప్రియా జీ థ్యాంక్స్ అండి. నేను చూడలేదు రాఖీ సావంత్, అది గూగుల్ చేస్తాను నేను, జస్ట్ గోయింగ్ టు గూగుల్ ఇట్. ओ राखी सावंत। इन अंकल लोग को कौन देखता है? मैं तो नहीं देखता। अनुज जी आपका तो लेजर फोकस है, मुझे मालूम है बहुत पहले से ही। हमारा अनुज जी के लिए तो आपने पहली वाली पिक्चर क्यों हटाई? क्यों हटाई? आई नो। हमारा तो अनुज जी, हमारा तो फ्रेंडशिप 1 साल का होने वाला है, तो 1 साल से ऊपर हो गया है, तो ऑब्वियसली हमको मालूम है कि आपका पसंद क्या है। तो आंटीज को हटाते हैं थोड़ा, थोड़ी देर। एक बार लेते हैं ये दादाजी का। ओके सो अभी तो मीम्स बन गए हैं बहुत सारे, बट हिस्ट्री क्लास में या किसी भी क्लास में अक्षय कुमार जी गए हैं कि नहीं मालूम नहीं है, बट इनका देखते हैं एक बार, थोड़ा इनका ड्रामा लाइफ में। सो इट सीम्स ही, oops, I think, okay, thank you. Oops, Preeti got disconnected, but let's try. So यहाँ पे here, hello Kavya, how are you? Thank you for being here. Guys, Friday night, you could be doing anything. Really appreciate all the footage. Thank you. So here, I don't go to Vaishnavi Devi temple, Devi temple anymore. I would rather spend that money where it helps. ध्यान से सुनिए, ठीक है? सो इट सीम्स हमको पैसे कहाँ खर्च करना है सिखाएंगे दादाजी, ठीक है? बट यही दादाजी हैं जो एक्चुअली हमको बहुत सारे मूवीज दिए थे,
like action replay in Eastman color. If you do remember this, and just play a song which will blow your mind. ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी के बिना ही बेचारा बहुत ही अच्छा खासा एक्टिंग कर दिया. Yes. Riya and Suraj Pancholi. So next week I'm trying to do Riya sir. वो season finale होगा and I'm taking a break for summer. So season finale में दीदी का मिल के करेंगे अच्छा सा roasting Riya का. Okay, and Suraj Pancholi का I'm trying to dig some of his bullshit as well. आपके लिए आपके entertainment के लिए मेरे को क्या नहीं करना पड़ रहा है प्रणव जी. Okay, just kidding. Okay, so here let's see this action replay of Akshay Kumar's life. Akshay Kumar stops visiting temples and religious places. ये होता है 10 साल पहले. उसके बाद बहुत सारे टट्टी मूवीज आते हैं अंकल के. 2020 तक जो भी कचड़ा है, हैप्पी, I don't even know the names of the movies, but sequel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब कुछ हो गया. अभी रिलीज होता है लास्ट वीक पृथ्वीराज चौहान. उससे पहले दादाजी जाते हैं हर हर महादेव करने के लिए. So if you can try to understand what he is doing, okay, so this is a little bit about him. Okay. Yeah, Preeti and Ayush, welcome back. Finally. So आयुष, ये चेहरे के बारे में आपका ख्याल क्या है? हेलो, नमस्ते सभी को. ये तो मेरे को लगता है कि हल्का होने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर उनको कट तक नहीं बोल रहा है. तो अर्जुन कपूर से भी गए गुजरी एक्टिंग किए इन्होंने. जैसे वो पानीपत में पुदीना बोए, एक्सपीरियंस लेके किया क्या इन्होंने. Don't talk. So हल्का करेक्ट हल्का ही हो रहा है. और उसके बाद बिफोर हल्का एंड आफ्टर हल्का दिख रहा है वो. ये देखो पुष्पा का विलन, मेरे को लगता है पुष्पा का विलन इसी से इंस्पायर हुआ है. But I know exactly, Anuj ji. Just he's an idiot. I just want to show you guys something. Indian Express जो भी अच्छा काम किया है. ये वहां से क्या करने आए थे समझ में नहीं आया. भगवान शिव भी इनका फिल्म का बेड़ा पार नहीं लगा पाएंगे. I know. So thank you, KD General ji. Please don't have your hopes high up. Content ही ऐसा कुछ है. तो यहाँ पे देखिए एक मिनट. Just want to show you guys. Insult है. I know, seriously यार. Okay, so age no bar for Akshay. ठीक है, उनका एक बात देख लेते हैं. इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही बढ़िया. थैंक गुडनेस दे डिड रिसर्च सो दैट वी डिड नॉट हैव टू. अपना ये कौन सी दीदी यहाँ पे थी जो बोल रही थी कि बहुत सारे, सोनू गुप्ता जी बोल रही थी कि हमको बहुत ज्यादा टाइम है, बट रिसर्च करने के लिए थोड़ा बहुत इनका हेल्प भी ले लिया है इंडियन एक्सप्रेस का. ओके, सो यहाँ पे देखिए 1992 से इनका एज गैप. ओके, सो 5 years, 3 years, 0 years, 12 years, 16, 21, 25, 25, 29. नेक्स्ट 2 years, 3 years के बाद तो 35 भी हो सकता है एज लिमिट, एज डिफरेंस. सो खिलाड़ी से लेकर सम्राट पृथ्वीराज तक का एज डिफरेंस 5 से लेकर 29 तक. सो अक्षय कुमार मतलब और कोई मिला ही नहीं है क्या मूवी बनाने के लिए. आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि इतना क्या है. So I think I'm hoping that all this mainstream media is also like paying attention to boycott Bollywood campaigns and actually doing good work like this. I don't mind supporting any
news media who does this. I don't know what other bullshit that they do, but at least this is good work by Indian Express. That's what I can say. It's just horrifying, यार. मतलब ठीक है. ऐसे कितने सारे एक्टर्स का होगा. I know. खाली अक्षय का ही निकला. आप आमिर खान से लेके कितने भी लोगों को काउंट कर लीजिए. SRK को काउंट कर लो. ऐसे ही होंगे सारे. Yeah, so I'll show you their. Oh yeah, I just wanted to show you something. So this is. So this is the most that you will see, right? This was like there was probably like 40 years age difference or some shit like that, like 40 or 45 age difference. And this is Sridevi and NTR. So Sridevi, like it's like child abuse, but like literally child abuse. And they used to have romantic songs. Oh, भाई साहब. ये देखिए. I don't know Ram Gopal Verma टट्टी करता रहता है, but this is a good one. So this is probably a good picture to show the age difference between Akshay Kumar and his as a heroine right now. Rijoji, okay, Rijoji, welcome sir. I think उनका buffer कर रहा है कि मेरा buffer कर रहा है. Okay, let's see. So here. Let me add when I can see him. Okay, so here, if you can see, so that is why, as you can see, she seems to have like some serious issues with herself, right? Like ये सबके साथ काम करके थोड़ा self esteem थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. Oh, okay, sir, welcome. Hello, how are you? Hope, peace and trust. Welcome back. So, Rijoji, we can't hear you. Hello. सबसे पहले ये जो होप पीस ट्रस्ट वाले ना, इनको पहले कहना चाहूंगा गैंग क्या होता है भाई. गैंग मत बोलो, वैसे ही ट्रोलर हमारे पीछे पड़ चुके हैं. Oh. Yeah. समझने वाले जो भी समझे यार. गैंग का ग्रुपिज्म. Oh my god. Okay. Yeah. I got the point now. Yeah. मेरा कुछ गैंग नहीं है. Correct. आयुष का भी कुछ गैंग नहीं है. Just joking. Okay. So here, yeah, कितना देखेंगे यार दादाजी का. But you get the point, right? So this has been happening, but अभी तो सह नहीं पाएंगे ना यार. ये क्या है? On TEDx, she's gloating on how manipulative she is. Okay, ये TEDx भी चली गई क्या? TEDx वैसे तो I don't hold a lot of credibility to it because TEDx is an independent association. You can just write to TED Talk saying that you want to do a talk and then do it. Anybody in the world can do it. So, yeah, I'm not really worried about that. Yes. Thank you. आपके नाम में ही hope, peace and trust है तो सबको समझ में आ गया कि you just don't mean anything negative. So don't worry. Okay, so अक्की बाबा का और देखते हैं talent. So 18 years of research इन्होंने किया है. रिचो जी आपका वॉल्यूम नहीं है सर. Can't hear. Yeah, Aish, yeah, bolo. Okay. So 18 years of research, 2 years of VFX, and 3 COVID-19 waves later, this day is finally here. It is time to now go to the big screen near you. So ticket भी खरीद के दे दो भाई. Book your tickets now. भीख मांगने का शानदार तरीका यहाँ पे देख रहे हो आप. I know. बहुत ही बढ़िया नौटंकी. I know. 18 years of research and only 40 days of shooting. भाई कौन सा फिल्म है जो 40 दिन में खत्म हो जाता है?
every movie it seems he only finishes it in 40 days. And अरे एक माइथ ये डिवोशनल सीरियल महाभारत बी.आर. चोपड़ा साहब का 8 साल लगे कैरेक्टर को ढूंढने में, और तभी वो परफेक्ट बैठा। exactly. है आज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर में दम। Manshi said that she is focusing on being a doctor. She is going to be a doctor. मतलब serials में, acting में कि real life में. Wonder why she's acting with grandpa. Okay. इसके दिमाग का इलाज कर दे बस। It's a good one. So Bala from Houseful in Prithviraj. Okay. So as you can see, same. So people who are questioning comments में at least मूछे तो नकली मत राउडी करो। राठौर से चुड़ाई हुई है। She is MBBS. क्या पागल कुत्ता काटा इसको कि एक्टिंग में आ गई। I'm just feeling so sad here. ये अकेली एमबीबीएस नहीं, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो हाई प्रोफाइल एजुकेशन करके आए। Yeah, she could be literally saving people's lives instead of doing the study. Hello everyone. Oh, sorry, CA guest. Thank you. What is MBBS? उसका भी कुछ डेफिनेशन हो सकता है एक्चुअली बॉलीवुड। सारिका जी वेलकम मैम, वेलकम। साई पल्लवी इज एमबीबीएस। यार तुम नया खुलासा कर रहे हो यार, यहाँ पे मेरे को मालूम नहीं था। So he actually trained in he did a very good job of training himself, Akshay Kumar, in the movie Prithviraj Chauhan, because Houseful 5 के लिए क्या क्या जो भी expressions चाहिए था वो सब कुछ समेट के he is now ready for Houseful 5. Okay, that is the only positive thing, guys. We have to see positive things in the world, okay, whenever they happen. So Sai Pallavi is MBBS. I'll have to check. Okay, so if you see this, it's legit. It legit looks like Akshay Kumar juggled between sets of Prithviraj and 4. Add hair to Bala and it'll be tough to differentiate. Seriously. डेड ट्रैक, ग्रीन ट्रैक। I know. Palash Sen singer. डेड ट्रैक एंड ग्रीन ट्रैक। Day track and green track? अरे वो पिच नहीं होता है क्रिकेट में, घास वाला, बिना घास वाला। Oh, sorry, I don't watch cricket. नहीं, वही देख के याद आ गया मुझे। मियाँ भी बच्चे सहित दिस इज फुल फॉर्म, जो जस्ट जोकिंग। ओके। अनुज सिंह जी, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का उठा के रखा है इन्होंने। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी होकर के एक गायक चला जाता है, उस पर कुछ नहीं बोलते लोग। के जिसकी आवाज कितनी मजेदार थी। I know. रिजॉय जी प्लीज बात कीजिए कुछ। थैंक यू मैम पुनीता जी, आपके फ्लावर बुकेज वाले इमोशंस, रियली अप्रिशिएट दैट। सो या कितने सारे वीएफएक्स बेचारे। तो वीएफएक्स से याद आया, ये मालूम ही होगा आपको। एक्शन रिप्ले। एमबीबीएस महा बेकार बेरोजगार स्काउंडर। Yes, MBBS. Hope Peace को बेचारा he has to adjust his thing. Yeah, he has to keep repeating कि सही में ये डॉक्टर गिरी है and not महा बेकार बेरोजगार स्काउंडर।
Okay, so here ये fake teeth लगा के, you have to remember that he is a master actor. Like as you can see, he's so talented, so believable in this role. देखिए, मतलब देखते साथ ही प्यार आ जाता है. कमाल का टैलेंट है, झूठ बोलने में कितना एक्सपर्ट है, ये दिल्ली के सीएम से सीखा है इसने. I know. So this guy finally Taranna Adarsh को I think उठ गया है शायद उस नींद से. I know, hope presenters, we don't want to alienate any doctors. Khebha. Bapre. Okay, so here Samrat Prithviraj is rejected the heavy budget on one hand and the poor outcome on the other. Okay, has sent shockwaves within the industry. नोट की गड्डी थमा दी हो गई, अभी उसके फेवर में कर दिया ट्वीट. नहीं, at least he is like yeah, shockwaves. I mean, अनुजी, इसके तो memes इतने सारे थे कि I stopped collecting because there's so many memes. People are just so directly retweeting and tweeting in replies to his posts. उसको कुछ शर्म है तो he'll change his ways. Such a loser. I literally found most of these memes on his Twitter replies. मतलब इतना just so scary that they are continuing to do what they are doing in spite of public opinion being so pathetic. Okay, so दीदी एक क्वेश्चन पूछती है and अंकल का देख के फट के हाथ में आ जाता है and बीच में याद आता है कि मुगल को भी सपोर्ट करना है बहुत तेज. तो एक बार देख लीजिए. Rijoy ji, can you try again? Let me see, I can mute you. Okay, let me see if I can unmute you. Okay, I can do that. But आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर. So Why is it, डॉक्टर साहब, कि हम लोग नहीं जानते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में? कहाँ पे कमी रह गई थी हमारे एजुकेटर्स में? Because nobody is there to write it in that book. In our history book, it should be written about. You have a single line. आपने भी नहीं पढ़ी उसका नहीं मतलब? पढ़ी है. अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है. I would like to appeal to the education minister and अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ to look into this matter and see it if we can change it. We can balance it. I'm not saying we should not know about Mughals, but balance it out. Know about our kings also. They were great too. Bring it in front of everybody. Our children would like to know about Maharana Pratap. Did you get asked at home? So बीच में बोलता है कि हमारे हीरोज को के बारे में भी लिखो, बट मुगल्स के बारे में जरूर लिखो, उनको भी, इनके बारे में भी लिखो और सबके बारे में लिखो, ठीक है? और they were great too, it seems. उसको हिस्ट्री क्लास करेंगे यार, इंग्लिश आती नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी just acting like. किराए पे अंग्रेजी बोलेंगे तो यही हाल होगा ना. I know. Hello, welcome sir, Raj ka Arjun. Hi. So yeah, any comments, anything about Akki Baba? Akki Baba is having a very bad time. He's having a terrible, horrible, no good, very bad day. I know. And we plan to continue doing that, I think, I hope for a very long time. ये जब तक अंकल जी निकलेंगे नहीं तब तक. I think I haven't seen Prithviraj. Has it been that bad? Like, how bad is it? I don't want to even know, but I've heard a lot of reviews make it looks like it has from every, they wanted to condense so much in 2.5 hours or whatever, right? So much of history that they don't do justice to any single event, even if it's a historical fact or not. So that is their thing. And then Zabardasti wo
रोमांस का एंगल घुसा के they just unnecessary song ये वो सब कुछ drama add करके they wasted a lot of time in that and everything, and yeah, he's looking like a caricature of himself with his fake mustache and everything, and that is one more problem. So it's just a bunch of things. Abhi, I think we should now also work on making this what's this guy Amir Khan's next movie a failure. Yeah. The age difference के बारे में I just wanted to point this out कि son is 57, mother is 40. मतलब कब तक ये चलेगा नहीं. I mean, nobody can be more sexist and misogynist than the film industry. Yeah, exactly. He's the same thing happens in Telugu industry as well. The heroines actually who acted with heroes 20, 25 years ago, now their moms, grandmoms, is just horrific. I mean, I mean, there are very few examples of actually young men acting as old men. Like I can only think of Anupam Kher in his first movie, like where he was a young man in his 20s Yeah, and he had to yeah. act like an old man in like. But I mean, there are see, I think it's also got to do with the fact that I don't know. I don't mean this in an offensive way, but maybe like on camera, women look older quicker. Maybe they age quicker on camera. I don't know. I mean, I have no Nee, experience of this. that is also true in real life also, because our skin is thinner than men's skin. So Okay. our wrinkles, so if you take a 40-year-old woman versus a 40-year-old man, the guy will look perceivably younger because your skin is thicker. Okay. So it's just how nature is. But ठीक है, okay, let's say, but what about 5 years age gap or like 10 years age gap, not like 29 years age gap. मतलब कुछ भी that's See, the other thing is that these men, what they have done is like throughout their careers, they have become basically institutions within the film industry. Okay, so because of their like success and whatever, so they are rigid and they are not willing to compromise on the fact that they will not be the star of the film. Yeah, Right, and mostly right. they are also probably producing their own shit. So I think that is the I just have to say this out loud. Justice for Sushant Singh Rajput. Supurna ji, thank you so much, ma'am, for the reminder. Appreciate that. So just wanted to read this. No, see, I guess the problem is he is actually now voicing out his concerns कि history books को बदलना है. अब तक क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या uncle? So that is the problem here. So अभी तक तो फ्री राइड था ना, अब तो फ्री राइड था, कोई टिकट का पैसा नहीं लग रहा था. अब टिकट का पैसा लग रहा है. Exactly. And ये अंकल का भी मीम्स निकालना पड़ेगा because ये अंकल पहुंच गए मूवी रिलीज के लिए. No, actually, I think the BJP is backing this movie for a particular reason. I think they are seeing a cost-benefit analysis in this. They're saying that politically it is just more useful to have a Hindu figure on screen rather than not have Prithvi Raj on screen. So I think they're supporting the movie because of that. They're trying to send a signal saying that support this film. I mean, don't become too focused on the historical accuracy part of it. Okay, okay. So I see what you're trying to say, that maybe they want to set an example कि इस type का movies बनाओगे तो हमारा support रहेगा या something. Yeah, basically that. But ये इसको just cannot tolerate यार. I mean, nobody else is willing to come forward. अब क्या करें? अब यही है कि like अक्की बाबा ही है तो अब क्या करें? कोई और तो आना तो चाहिए ना. Somebody has to come forward. Up now this other fellow has come forward. What's his name? Who's doing the Veer Savarkar movie? See, I like that kind of movie. They're doing it justice. They're doing it in a more historically accurate way. No song or dance. Veer Savarkar, 1 second. We don't know who it is. I have to check. I'll check.
Yeah, but इसका ये गुटका अंकल का एक बार just wanted to show the profile एक बार so that we don't forget what happens to us if we inject gutka. I mean, do you spend a lot of your day like searching for these perfect pictures? यार जोर से मत बोलो प्लीज, घर में थोड़ा World War 3 हो जाएगा. Exactly, KD General G. 18 years distorted facts. I know. 18 years of research. Sabita Ji, Justice for SSR. Thank you, ma'am. Send them to old age home. I know. Just want to show a clip of a legendary song that he had done. Kitna creativity and imagination hai bhai sahab mein. Like this, take it to the left, or you can do it like that. Shake it to the right, all my ladies and my mans and all my ladies, all my ladies and my mans. I mean, Like this, shake it to the Huh? do we have to go through this psychological trauma again? mans and all my ladies. जोर का झटका है जोरों से लगा, लगा. जोर का झटका लगना है इसको अभी. To be fair to Akshay Kumar, this is a movie made by Vipul Amritlal Shah. Vipul Shah is the guy who did another Kashmir movie thingy. Is that the guy? Anupama No, Chopra? that is Vidhu Vinod Chopra. Okay, sorry. That guy is a different level of crook. But with Vipul Shah is like a terrible, I mean, filmmaker. Like he has made really bad movies. And this movie was a remake of Back to the Future, like wo Steven Spielberg wala, starring Michael J. Fox. Time Machine. And it is such a bad movie. This is such a bad movie. I mean, it is such a bad copy. It is an obvious copy one, without all that science fiction mumbo jumbo, and without the basically this is saste ka Back to the Future. or down market Back to the Future. I mean, वैसे समझ लो आप. It was so bad, and it was, most of all, it was very crude and crass. It was very, the humor was very बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं, cheap. Cheap, yes. ये मुझे लगता है ये मूवीज ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है पीछे पैसा घुमाने का. That's it. आप कुछ तो दिखाना है उसमें तो दिखा दो कुछ भी, अपना मेन मकसद पीछे उसको घुमाना है. I remember Sushmita Sen का एक, I remember it, like filmmakers often push, when I saw this movie I thought like none of these people behave in this cheap manner in real life. Okay, because they're from okay families. Like Sushmita Sen had once said, like in an interview, that she had to refuse a role or something like that because the kind of things they were getting her to say, getting her character to say, or kind of behavior they were getting her to do, she had to tell them that a person like this in real life doesn't behave like this, right? A character like this won't behave in this manner, won't say these things. So she had to refuse the role or something like that happened, and they have this very weird, I don't know, like how they hire screenwriters and dialogue writers and script writers. I don't know what the requirements are or whatever, but they have this very peculiar model of how people should behave or act in movies, which is not realistic. It is very far from any form of realism. I mean, that is the thing, right? But people watched all kinds of shit that he showed, and now PR is just so active. From the past 2 weeks, I'm seeing like 7 foods Prithviraj actor Akshay Kumar swears by at the age of 54. So gutka is also one of them. I was trying to look if gutka is also one of them, but I couldn't find that. I mean, vegan gutka. I know. Chia pudding with berries. Is he in America or kahan pe hai ye? Avocado on toast? Fruit smoothie? But these are the people जो advertisement में Coke और Maggie sell करते हैं. Exactly.
और ये खुद चिया सीड्स और जूस पीते हैं, तो ये अकल के पत्थर हमारे मारे गए हैं कि उनके मारे गए हैं? I mean, to be fair to them, हमने इनको फेमस बना रखा है, so it's our fault also. Okay, I mean, we can't really divorce our own responsibility from this. Yeah. No. We are taking responsibility. That's why we are here, Ajkar Judy. We are all here to पाप का प्रायश्चित करने के लिए. एक तो आजकल इन लोग ने नया ट्रेंड चालू किया, ये भगवान की भक्ति बहुत कर रहे हैं आजकल हर मूवी से पहले. बहुत ज्यादा हो गया. हर आदमी भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा है. भगवान की भक्ति is, I think, the new sort of गंगा जल. क्योंकि मैं देख रहा था, there was this very controversial IAS person who had topped IAS, the IAS exam, and her name is Tina Dabi. She's from the Dalit community, and everybody was very proud of her. But what ended up happening was she married a Muslim fellow, right? And then there was a lot of controversy around that. And now what happened was, within 2 years she got divorced. Triple talaq ho gaya uska. हाँ. So, and she discovered exactly how secular her husband was. So what happened was, after that, she was doing, for many months, she was uploading on her Instagram and Twitter. She was uploading like she's doing bhajan kirtan and Ganesh puja and ye puja, wo puja. And then she married a Hindu fellow who is like several years older than her, and who has a questionable past regarding corruption, and is supposed to be very close to the Congress. So, I mean, I don't think a zebra can change their stripes, I guess. But they try through all this. People are desperate. I know, people are just desperate, and it's just. I think I've heard about that lady that you're mentioning. Yeah, it's Tina Dabi. Sorry, 1 second. Tina Dabi. DABI. Oh wow. Celebrated IAS officer breaks silence on second marriage. Oh my gosh. And just 28 years old and already second marriage. Just so sad. Yeah. Just hope this lasts. That's all I can say. They have some serious identity crisis here. All these people, I don't know why. Because they're all westernized, no? पूरा एकदम Western culture follow करेंगे. In an Indian context, they're completely divorced from reality. So divorce from reality leads to actual divorce. I know. कि हमारी जिंदगी में तो पति तो शाहरुख खान ही है ना, हाथ फैलाया हुआ. This is how we grew up with, right? But reality वो नहीं होती है. I mean, I think your pati will disagree. No. ऐसे मत बोलो. I mean, he will feel, उनको सदमा लगेगा. नहीं, मेरा पति है, बहुत प्यारा है, but मैं नहीं चाहती कि वो शाहरुख खान की कॉपी करे और हाथ फैलाए. I mean, nice save. He should I be guess. original, okay? He doesn't need to be Shahrukh Khan, and I don't need to be Alia Bhatt. Kalia Bhatt. I know, she is uska. Yeah, I wanted to show this video last time. 1 second. Didi ka. Red tea, black tea. इसमें शुगर डाला है? शुगर डाल के ले आया? इसमें शुगर डाला है? कौन सा गोली? मिक्स कर थोड़ा सा डाल. नहीं. ये देखो, इतना पैसा कमा रही है पर ये शुगर भी नहीं खा सकती. अच्छा नहीं है शुगर. शुगर अच्छा नहीं है. Not good for you. At all? No. At all. तो मेरी मम्मी मेरी दुश्मन है कि मुझे रोज. अच्छा, असल में सच है क्या वरुण? कुछ बोलते शुगर नहीं खाना चाहिए, कुछ बोलते नमक नहीं खाना चाहिए, तो मर जाएं, क्या करें? I mean, that's an idea. खाना चाहिए. अच्छा, शुगर अगर दीदी इतनी ड्रामाबाज है. देखो, फ्रूटी मतलब जो भी है, एंड कोका कोला, एंड देन व्हाट इज द अदर थिंग? कोका कोला एंड cornetto curry. Sure, that's an ice cream loaded with sugar. Biscuit. And then some kind of some chocolate chip biscuit, I guess she do add for that as well. Yeah. New Sunfeast Dark Fantasy Big Choco.
सब लोग खा के, you won't believe it. I went to, so here also the average child who is 11 or 12 is looking like 15 or 16. Okay, because our kids inject all kinds of hormonal milk, which is extremely hormone injected with hormones and everything, growth hormones and everything, because the cow is given growth hormones, and then all that come into this, right? And when I went to India from the past 4 years, I'm seeing that kids are like just becoming bigger, and their snacks are pretty much these. All these, this girl, whatever she was eating, I remember this very clearly. It's like chocolate melt in the middle and all that. And I disagree with that, because I don't think I have had that kind of experience with the thing, because I think you're seeing kids are becoming bigger because of health, and diet has improved a lot, because now people are becoming wealthier, no, generationally they're becoming wealthier. So I think diet has improved, and that's why kids are just becoming bigger in general, because India actually, is now moving towards a middle income country. So the entire economy is different, like food habits are different, and I think that's got more to do with it, I think. they're bigger. I don't agree with this. Yeah. The food chain came to India nowadays. It's been almost, I think, 7-8 years. The food chain, the pattern of food is coming in India. A lot of cheese, lot of oil, butter. वो तो always था. No. आप किसी भी ढाबे में चले जाओ, पर आप ढाबे में खाते कितनी बार हैं? I mean, weekends? I mean, I don't eat that much from outside. We eat maybe once a month from outside. It's like that. आप once or twice मेडिकल a month. इंडस्ट्री देखिए कितना ग्रो की है कुछ सालों में इंडिया में. आप उसी से देख लीजिए. Yeah, that's also there, but वो किस वजह से है? वो फूड. If you're eating healthy, actually, I'll tell you, if you're eating healthy, you're not going to grow. See, India has the South Asian countries, South Asia, especially India, we have the highest rate of heart attacks and everything. Our obesity rates are increasing like anything in India, just like in the US. So our kids are not, it's not the healthy growth that, see, some urban areas, what you're seeing, probably they're like leaner, taller, muscular. I'm not talking about that kind of big. I'm talking about chunky, around the waist, chunky, around the. Oh, okay, like that. It's a fat. Yeah. Obesity. Yeah, exactly. So, बिकॉज एक तो खाना ऐसा, ऊपर से हमारे यहाँ लत लगी है लोगों को वीडियो गेम्स की. आउटसाइड थिंग्स आर टोटली आउट, क्योंकि सबको ऑनलाइन क्रिकेट खेलना है, ऑनलाइन पबजी खेलना है, ऑनलाइन फालतू चीजें खेलनी है. सो कल्चर तो चेंज हुआ है ना. आप देखिए छोटी छोटी एज में लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं. कब आते थे हमारे टाइम पे? बट दिस इज द लाइफस्टाइल चेंज. I mean, one easy fix for that is just do pran kriyas. I mean, pran kriya karo. I mean, even if the kid doesn't want to like sort of go out and jog and exercise. पर सर, आलिया भट्ट दिखाती कहाँ है pran kriya? वो तो मैगी दे. So do you need Alia Bhatt to show you that you need to do pran kriya? नहीं, but she is the role model. करते हैं ना. She is the role model. देखना चाहते हैं. Yeah. I mean, anybody who considers Alia Bhatt a role model is already lost. नहीं, हमारे आजकल की जनरेशन तो उन्हीं को देखना चाहती है ना. I mean, वही तो बात है ना कि जो सामने फेस दिखा रहे हैं वही लोग क्या बेच रहे हैं, और खुद अपना योगा करते रहते हैं पूरे दिन. 66.3 million followers. Okay, ठीक है. 50% of it is fake, like Deepika Padukone. Okay, that is still 30 million followers. 30 के बाद 6 zeros. So, I mean, somebody is getting 6.5 crores. Yeah, 6.5 crores. Okay, let's say half of them are this thing, so 3.25 crores. So 3 crore people are getting influenced, right? We cannot deny the fact that these losers are influencing other losers in the, I like what Preeti says quite a bit. She says ki, people are trying to mimic their clothes and everything. Short skirts पहन के निकल जाओ लड़कियां, but they don't have the same protection. आप देखो ना कितने सारे इंस्टा रील हम लोग देखते रहते हैं, राइट? क्या कर रही हैं लड़कियां? वही कर रही हैं ना जो ये करते हैं. तो दे आर इन्फ्लुएंस. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता माँ बाप क्या बता रहे हैं. उन्हें मतलब है कि ये लोग क्या बता रहे हैं.
तो किसको See, योगा में इंटरेस्ट है? शिल्पा now शेट्टी को देख के योगा करना है उनको। young girls will do this for one reason. First of all, young girls will get on Instagram. They will do it because their mothers have told them, their grandmothers have told them that देखो हमको कैसे दबाया गया है, लड़के लोग they were all misogynist and sexist and they never gave us any chance. Now you have to do. अब ऐसे करके अगर सब बोलेंगे तो यही होगा. Yeah. See, but nobody, no woman will ever tell the history of India कि कितना gender equality था, कि like when there used to be democracies 3,000 years ago, 8,000 years ago, 14,000 years ago, women could vote then. तब तो वो सब हिस्ट्री तो कोई नहीं बोलेंगे ना. बोलेंगे कि दबाया गया है, जो कि maybe in the last 600 years हुआ है and it was wrong. But that was more of a societal sort of trauma response to sort of all these Islamic invaders who used to come in and sort of फिर मीना बाजार में उठा के ले जाते थे. To stop that from happening. See, for example, I'll give you one example. Like जौहर क्यों करते थे? हाँ, वो तो जहर खा के भी मर सकते थे. All the women in Chittor and all that. Rani Padmini could have died by drinking poison also. But why did she burn herself? Because she knew ये लोग dead bodies को भी नहीं छोड़ेंगे. That was the level, because in Islam, anyway, necrophilia and all that is there. Because Al-Azhar University recently there was a necrophilia fatwa sort of announced, where Imam said that you can have farewell relations with your wife up to 6 hours after her death. ऐसे अगर फतवे निकलेंगे तो जौहर तो होगा ही. Right, that's a trauma response. I mean, they know that dead body को भी नहीं छोड़ेंगे. Okay, I am just, I don't know, no comments. I'm really sorry. I don't know about all this, but just shocked and saddened by what you just said. Google it right now. Al-Azhar University, Cairo, Egypt. Google it. I'll just say justice for Sushant Singh Rajput. HO, welcome. Thank you so much for that reminder. Life is so disturbing on so many levels there. Oh my God. Okay. No, Punita ji, आप तो all caps में लिखती है. How can I ignore your comments? Even Feku, I sent you the Shilpa Shetty birthday video. Did you see that? Yeah. When he said Shilpa Shetty, I wanted to. When he said yoga and Shilpa Shetty, I can't believe it कि लोगों को कैसे समझाया जाए. Yeah. वो लेडी जिनको ये भी नहीं पता था कि उनके पति क्या कर रहे हैं घर में, इतनी झूठ, और वो इंसान को आज भी आप इतना सर चढ़ा रहे हो. मतलब इसके आगे तो क्या ही बोल सकते हैं. Who wants to boycott the Archies? वो जो सुहाना खान का जो अभी जो नया व्हीकल निकला है. Oh, by the way, one big thing about Alia Bhatt nobody talks about. Yeah. Her brother, her half brother or step brother, I don't know, was the one who showed David Headley around town. Yep. Before they planned the Mumbai attacks. Nobody talks about that. I think we know that he actually created a book and everything and released it. वो पूरा family ऐसे ही है. अरे सर, जब संजू बाबा को भगवान बना सकते हैं तो फिर वो क्या है? तो ये ना कि जेल करके आ गए तो भी ही इज स्टिल अ भगवान जी. ओके फाइन. और इस मैडम को पता ही नहीं था ये जो हमारे फोटोग्राफ दिख रहे हैं, तो इनको पता ही नहीं है कुछ. इनको ना घर में क्या हो रहा है पता है. सेकंड बर्थडे केक वो अपने पति के साथ काट रही हैं, और इन्हें पता होने के बाद भी इन्होंने क्या किया अपने हस्बैंड के साथ? केक खा रही हैं, आराम से एंजॉय कर रही हैं, पार्टी कर रही हैं. तो फर्क क्या पड़ता है इनको? I mean, what a criminal! But you have to hand it to this. Raj Kundra is like a through and through criminal. I mean, he's not just a match fixer. He's like a criminal of all kinds. और पता होने के बाद भी आप अपने पति के साथ रह रही हैं, एंजॉय कर रही हैं उनके साथ वेकेशन. तो फर्क क्या पड़ा बिफोर आफ्टर में? आपको नहीं लगा कि आपके खुद की भी एक बेटी है और वो आदमी क्या कर रहा है दूसरों के साथ? पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. ये सब एक थाली के. और फिर जब ये कहती है ना कि इन्हें पता नहीं था इनका पति क्या कर रहा है, दैट्स वन ऑफ द झूठ. Katrina Kaif is doing sugar-free advertisements, guys. Sugar-free also
all this Splenda Venda सब कुछ is also treated by the brain exactly like sugar because that is the Yeah. taste when yeah. sugar. वो वाला sugar अच्छा okay Judy Sugar. welcome ma'am welcome yeah याद Judy है उसके हस्बैंड का एक वीडियो निकला था करण जौहर के घर पे शुगर ही तो Hey Judy, sorry, yaar. Yesterday I was not able to completely check. I will check. But yesterday Judy did a space. It was amazing. Brought us all together on the same page for SSR. इवन एक बॉम्बे में एक बेकरी पकड़ी गई थी अगर आपको याद हो तो केक की वाली जिसमें केक केक वाले पे they were mixing it if you remember that. Mixing what? वही sugar free. नहीं thank you Judy बॉम्बे thank में you. एक बेकरी पकड़ी गई थी मुझे याद नहीं है but it came to a news. She's always going to bakeries. ब्राउनीज और समथिंग ब्राउनीज पकड़ी गई थी किसी बेकरी ब्राउनीज आई एम श्योर वो एक न्यूज में आया था क्योंकि इट वाज अ वेरी बिग न्यूज लास्ट ईयर कि ब्राउनीज में से यू नो समथिंग केम आउट लाइक दैट आई डोंट रिमेंबर कौन सा brownies बट इट वाज इन बॉम्बे दैट आई एम श्योर actually yeah this is Suhasini ji this is actually something that हमारे संवाददाता प्रीति जी ने actually दिखाया था one second let me show you it is so horrific शिल्पा टट्टी के पास बाद में आएंगे एक बार यहाँ पे देखते हैं मां को मार डाला बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटे को मोबाइल फोन पर पबजी गेम खेलने की लत थी मां रोक टोक करती थी and then मार दिया बच्चे ने. So Suhasini ji is also talking about the same thing. I think people have gone completely haywire. Brain dead हो गया शायद public का बच्चों का. I mean, नहीं यही तो वो चाहते हैं. I think there is. No, I don't think the game has anything to do with it. I think that kid had other underlying emotional issues way before he was introduced to PUBG. नहीं. Okay. What feed into लत का है. Let me show you something then. Yeah. It's both feed into each other. It's not that easy. One second. Let me. Mental health. I have an article here that I'll show you. It's just so annoying. आप देखिए आईपीएल के टाइम पे खुलेआम चल रहा था आप ऑनलाइन आईपीएल में अपनी टीम बनाइए खुलेआम जुआ खेलते हैं ये लोग तो लत नहीं होगी तो फिर क्या होगा that has a different reason क्योंकि जुआ तो लोग खेलेंगे ही rather legalize it than keep it illegal because illegal जुआ has a lot of पर बात other तो फिर वही effects है ना on society. बात तो फोन के लत की है फिर जब जिस दिन साइकोलॉजी छीटेगी और फिर जो मना करेगा वो तो दुश्मन बनेगा ही ना आपका ऐसे ही तो हमारी फैमिली टूट रही है और बच्चे अकेले पढ़ रहे हैं क्यों क्योंकि माँ बाप दुश्मन हैं ये लोग सगे हैं That's a education problem. वो लोगों को educate करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? Social ills go away with education. That and not like secular education. You have to like have like proper grounding in your own way of life. You have to be spiritually grounded. You have to have like intellectual sort of education. You have to have a different all sorts of education होना चाहिए. The community see I agree but the mental health video game lobby video game industry gun control gun violence especially in America all of them are tied together they are not silos ki ek operate ho jayega ek fix ho jayega then we can move on to the next one they all feed into each other the problems are फेक्टा जुआ पहले भी चलता था हमारा जो जनरेशन था उस टाइम पे भी चलता था हम भी कॉन्ट्रा और मारियो जैसे गेम खेल के बड़े हुए हैं ऐसा नहीं हमने नहीं खेले बट हमारा एक एक टाइम होता था एक पर्टिकुलर रेंज होता था कि हाँ ठीक है खेला और आ गए ऐसे पागल नहीं हो जाते थे कि हम मार पीट रहे लोगों को उसके लिए मैम आप शायद रईस घराने से है कि आपने कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा खेला है नहीं सर रईस घराने से नहीं है बाहर I remember खेलते थे रेंट पे I also remember the 90s ऐसे खेलते थे कि पागल ही हो जाएं कि चोरी कर रहे हैं उस 1 घंटे को खेलने के लिए मैम देखो the other thing is कि video that just shows how wealthy you were when you were growing up no I was not at all this is actually I grew up in a very big joint family भाई बहुत खेलते थे तो भाइयों के साथ जब बहन भी घुस जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता
लेकिन ये है कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड द थिंग्स दैट हम लोगों को मिलते थे कभी कभार ब्रांड पे जाके पैसे खेलने के लिए. ऐसा नहीं देते थे कि हाँ ठीक है जाके खेल आओ दुकान में, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि नहीं मिले तो हम चोरी कर रहे हैं घर में बैठ के या किसी को चिल्ला रहे हैं या अपोजिट आंसर कर रहे हैं. ठीक है. See, I'll tell you how, like, I have a very peculiar memory from when I was in school. When I was in the 11th or 12th, I used to see like there were girls in my class who could be called, say, कि वो लोग ज़्यादा high flying थे. They used to talk about odd things like वहाँ से हम अगर बंक करना होता था तो बंक करके हम लोग we used to go to the movie theater. वो क्या बोलते हैं वो वहाँ पे I'm sorry, disturbing क्या? No, please continue. Sorry, I'm just 1 minute. I'll be back. Yeah. Anyway, so I was saying कि वहाँ पे girls used to talk about silly things like they used to take pride in the fact that they used to shoplift. They used to go into like all these branded stores and shoplift from there. And this was in Delhi. I was in army public school, Dholakwa. So I was saying like, what kind of like, and many of these kids were like from army backgrounds, because I'm also from an army background. Like we वहाँ पे army school में. So it was a very peculiar. I don't know. It's a very peculiar culture. I mean, deracination जिसे बोलते हैं. I don't know. Somehow I really feel sad कि बच्चे कितने फैमिली से अलग होते जा रहे हैं, and that's उसी चीज का फायदा ये लोग उठाते हैं. This is a horrific example of the real life this thing, the video gaming industry. Ajka Arjun, actually I teach robotics and coding, and my youngest kids are 5-year-olds who actually play FPS games, first person shooter games. Mm-hmm. Do you know how horrific and violent they are? I know. It's just bang 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 bang, just the whole thing is just so horrific, right? So आपने वो वाला देखा है बाप ऑफ ऑल एफपीएसएस आपने देखा होगा, वो क्या बोलते हैं Doom. Yeah, Doom. That is extremely graphic, and they sort of incentivize like creative ways of killing and more gory ways of killing, like whatever. Exactly. And for those of you, I'm just trying to pull up a thing that I wrote, but I'm not able to. I'll show it to you. But Justice for SSR 14 June mission Jantar Mantar. KD General Ji, thank you for the reminder. And Fekta, I have one more incident. I didn't send you that because I was very upset reading that. Same thing. One more news that one of the 24-year-old mom with a 1.5-year-old daughter. She was making a TikTok video, and I think the baby was, just pulling her legging for asking something, or maybe, disturbing her, whatever it is. And, she was pushing her because she was making a TikTok video, but she was not listening. After she finished the video, she hit her so hard that that baby died. What? Seriously, these are the newses. I couldn't even send her that because I feel so upset about that. People are so psycho about TikTok videos and all that. You are hitting that child because she was disturbing her making that. These kind of news is seriously. Ma'am, by the way, are you Bengali? Me? Yeah. New intel, ready. Fury kill. Bombers ready for orders. And Fekta, I think मैंने आपको एक और न्यूज़ भेजी थी जिसमें मॉम ने I think बच्चे को होमवर्क न करने में punishment. I was going to show that. I was going to show that while we are at it. How psychology of people. That screams of the child, I could not even watch for more than 3 seconds. It was horrific. Hey, I just wanted to show, for those of you who don't know what FPS games are, these are the kind of games. These are the kind of guns, ammunition. And this is the sound. I mean, when I was in my school days and all, I mean, it's like all the rage amongst the boys there. It's no, but we also had a driving.
Preeti ji, We I'm sorry. also I'm so sorry. नहीं आप मुझसे पूछ रहे थे I कि मैं mistook her. बंगाली हूँ. Yeah, I mistook. मैंने actually वो यहाँ पे there is a band and I can't see the who's speaking. So वहाँ पे I just saw a Bengali name. वहाँ पे कोई सेनगुप्ता बोल के हैं, तो उनको मैं I thought you were speaking from there. हाँ, नहीं मैं So- इंडियन हूँ और मैं अपने आप को इंडियन मानती हूँ. उसके आगे तो सब ऊपर नीचे होता रहता है. नहीं, so यार ये कहाँ से आ गया बीच में? Okay, so 1 second. Justice for SSR. Yes, Hema ji, thank you, ma'am. Shilpa Shetty not avail. Yes, so I'll show you. Namrata ji, 1 second. Preeti ji had sent a video, and this is the celebration for Shilpa Shetty's birthday that people are doing. Okay, fans. ये fans को, if you guys see anybody, their faces are here, no masks or anything. If you see them on the road, तो चप्पल से मारो please. What the? I can't believe this is fans. I I can't know. believe this is paid for. This is some flash mob that has been paid for. दीदी is so shocked and surprised. हाय दया, क्या हो रहा है यहाँ पे? वैसे तो हम जाहिल हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सिविलाइज्ड होने की प्रिटेंड कर रहे हैं. बेडरूम में कुछ और करवाते हैं पब्लिक से और पैसे कमाते हैं. You have to be very spectacularly megalomaniacal to like sort of enjoy this. नहीं, actually there is उनके a term. पतिदेव हैं पीछे, देखिए वीडियो ले रहे हैं. पतिदेव तो वीडियो, यार उनका तो वीडियो खींचने का ही शौक है ना. बहुत उनमें से जितने पसंद आए होंगे उनको स्पेशल मैसेज गया रहेगा ना. सिलेक्शन, DID सिलेक्शन. Yuck. So this is the kind of so, but the song, the name of the song is not Nikamma. So I was like, yeah, itna perfect. It can't get any better. Unintentionally ironical. I know. ये देखिए, yes bakery in Malad area in Mumbai. Okay, Namita ji. But ma'am, by the way, well done that आप robotics and all आप coding करते हो. That's like a very high. That's a very highly specialized field. No, actually, thank you, but I cannot talk anything else about that यहाँ पे, because people have been roasting me कि I am trying to promote my company here and all that. So I'm not going to talk. No, I'm okay. I mean, that's unfortunate, but No, I'm just joking. I think Sir, people should. what my mission is Nobel Prize 2042, but before that, the goal is through life skills and machine learning and AI. I want to reach as many children as possible to show them that our creativity and our imagination is the only weapon we have in the world. And why am I going to watch somebody else's YouTube video or anything else, or play somebody else's game, when I can use my creativity and imagination and create something for the world? No, so all tech companies are basically working towards AI. ये China का जो अभी ban किया, वो TikTok ban किया इंडिया में, that has really significantly hampered their AI development, because वो लोग सारा data चोरी करके AI development में डाल रहे थे. So yeah. I think India will benefit from our own AI development, and I think if you can do that, that's like fantastic for us. Thank you. But there are a lot of players, sir. I'm a very small fish. Byju's and all those people that playing games with people, and I know families and I know moms who have spent 1.5 lakhs fees. They are paying EMI to Byju's, monthly EMI, so that their kids can learn coding from 6 years. I'm like, mouse to pakadwa do. वो तो that's a scam. 1.5 में That's a scam. SRK की जेब में कितना गया? I know, that is another joke. That's another joke. And I'll tell you, ma'am, I think you can do both. You can like provide ethical online education and help AI development. I think you can do both. No, thank you, sir. My goal is to go into education policy. Hopefully, I will get a chance. But yeah, a lot of justice for SSR is a priority. My personal mission is priority too. So a lot of things, but really appreciate your comment.
And Fekta, we will advertise, okay? We don't want any नहीं celebrity. बाबू प्लीज We don't want any celebrity, please. नहीं I'm very happy with my it's all word of mouth. I cannot pay Google $4 a click. वो $4 a click I used to pay in 2017 and 2018. वो nobody, first of all, it's just so difficult to convert. Like मतलब कौन click करेगा, कौन आएगा, and who will enroll and all that. It's just word of mouth at this point. I'm very happy. See, the other thing is, ma'am, that you. I mean, just to troll everybody, I think you should like start a successful like all this like education company, and then exactly sort of hire Shah Rukh Khan to do your promotion just to troll everybody. He cannot even be a janitor यार, छोड़ो promotion करना मेरा. At least उसका face दिखा देना जिसका बच्चा कुछ बन गया हो. I know, exactly. कम से कम उस पढ़ाई का कोई तो justify तो हो कोई. No, but the biggest worry here for me is for our future role models like these ladies who continue to release. I'm like, why are you so desperate again? See, this is the thing. Oh yeah, this was the. ये वही मैं कह रही हूँ कि ये हालत है हमारी. मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या mental issues है लोगों को. See, when I see into this. If you listen to this video, like I could not even play for 5 seconds that बच्ची. Ma'am, ये please यहाँ पे play मत करना, please. इसको this is too heartbreaking. And the other thing is, ma'am, I'll tell you one more thing. विदेश में अगर आप देखोगे, यहाँ पे how do they portray Indian parents in their own serials as weirdos, as or like obsessed people who are pressurizing their kids, destroying their kids' individuality. Tiger moms, yeah, tiger moms, and like वो लोग तो लगे ही हैं defamation करने हमारे way of life को. और मैम, when I see these kinds of videos, मैं बोल रहा हूँ कि you are just giving them more and more fodder. Yeah, exactly, by doing all these things. And there's so many things that we couldn't be doing, but look at as you just said, Shilpa Shetty and Karan Kundra and all these people have to turn off. Some parts of their brains have turned off and they cannot even work because itna sociopathic mentality hai na inka ki they can just go ahead and do those kind of things even though they know their own backdrop and what people perceive them as. But look at how they are trying to flip the narrative and do all these things. And look at these parents. They're just so... I don't know. You have to shut down a part of your brain to be able to function like this. It's just, sorry. Thank you for stopping me from playing it. It's just horrific and it cannot... It's just an insult to the child. Punita ji, I think he is getting some kind of internet issue. वो निकल गया शायद. And Rijoy ji यहाँ पे है. I think बेचारे he's not able to. I think इनका audio में कुछ है गड़बड़. सर आशीष जी कुछ मराठी में बोल रहे हैं कि I'm not मराठी. यार कोई पढ़ लो यार. मराठी व्यक्ति दादा साहेब फाल्के ने मुंबई में पहली फिल्म बनाई और पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए परिवारों लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया. हाँ, I mean, वो भी हमारी गलती है. हम ही पागल है कि जो हम इनको सब खान बना रखा है इन लोगों को. So Preeti, your audio was breaking a little bit, so I was just trying to check whose it was, and I think it is yours. Can you just adjust a little bit your microphone and then please unmute yourself? Thank you. Thank you, Shobha ji. Thank you so much, ma'am. Appreciate your love. Really appreciate that. So this is just a sad state of affairs yahan pe. But okay, I just wanted to, while we are in the concept of sad, I just wanted to play this. It's sorry, it has some very bad language, but Shanka, look at the kind of education that we are giving our children, that उनको फर्क महसूस नहीं हो रहा है कि कौन रियल टैलेंटेड है एंड कौन ये है. शिल्पा के लिए तुम लोग ऐसे डांस करोगे, बट लुक एट व्हाट शान के लिए तुम लोग क्या करते हो. सब लौड़ा वोड़ा बोलना बंद करो यार. ये क्या है? कौन से लोग हैं ये? तमीज से बात करेंगे और बदतमीजी मत करो, गाली वाली मत दो यार, क्योंकि दैट शोज योर ट्रू कलर्स कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है. और आप किसी किसी के साथ अगर आप पेश आ रहे हो, आप अपने माता पिता से पूछिए मैं कौन हूँ, अपने टीचर से पूछिए मैं कौन हूँ. कम गाने गाए हैं, कम पॉपुलर गाने गाए हैं कि आज मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ. कोई शान भाई लुंगी डांस करो,
क्या हो रहा है? What are the comments? मैंने कहा था तो हमें मत सिखा रे कुत्ते, पहले खुद के गाने देख के इतने घटिया बनाता है तू। ये भी कुछ आया है, फटेले निरोध के नतीजे। सो अगर दिस इज द, इस श्रेणी के लोगों से मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए या इनकी मुझे क्या कहें मतलब थम्स अप्स चाहिए। And why is he even responding? नहीं यार गुस्सा आता है ना यार, मतलब जस्ट ये इट्स अ लाइव चैट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है जो हर्ट होती है सर, ऐसा नहीं है। वो ही इज लाइक टू मीट पीपल, नॉट लाइक टू लिसन ऑल दिस थिंग्स। I get it. But the fact is, see, like आपने वो वाला मीम देखा है? See, retrospect में maybe he could have just like ignored, but live में when somebody is throwing shit at you, you would just like to defend yourself ना यार, कि मतलब क्या No, let them say, no. I mean, live में कौन क्या बोल रहा है बोलने दो. This just shows their mentality. And most of these people will not even be from India. They'll be from some far-flung corner of the world. I mean, कोई कौन से constipated, jobless, frustrated with their own life. I mean, जाहिल लोग तो जहालत में रहते हैं, तो रहने तो जहालत में, उनको क्या करें, उनको रेस्पॉन्ड करके उनके लेवल पे आए क्या? Shan should also see. I think Shan should grow a thicker skin because he's a public personality. I think he should grow a thicker skin. Because there will always be people who talk like this, who are nothing themselves, and they will attack people who are accomplished. That is true. That reminds me, just want to show एक सर क्या होता है ना, 4 करोड़ में 10 लाख लोग बोलते हैं ना, फर्क नहीं पड़ता है। देखने वाले 1000 हैं, उसमें अगर 40 लोग बोलते हैं ना तो फर्क पड़ता है, क्योंकि उस इंसान को कोई आजकल पूछता भी नहीं है। तो वो जब आता है लाइव, ही एक्सपेक्ट 50 पीपल, और उसमें 50 में भी 10 ऐसे गाली दे रहे होंगे ना, तो इट हर्ट्स। वो है ना, वो क्या बोलते हैं, वो किसी ने वो YouTube पे वो मीम देखी है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट पे कुछ नहीं बचा। होल्ड अप आपके लिए स्पेशल फरमाइश है, 1 सेकंड। ये दीदी तो मेरे पास ही ये दीदी तो मेरे पास ही रहती है हमेशा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, बच्चों के बच्चे इतने अनफटी के ये बड़वे। I had to do that because ये दीदी is amazing. I mean, when I first saw this meme, I was so shocked, and out of that shock, I just started laughing. It was so funny. Justice for Sushant Singh Rajput and Disha Salian, justice for SSR, justice for Sushant Singh Rajput. Yeah, no, seriously, this is like this guy is another level. Ye buddha, this loser T4296, ये मरने के बाद भी ऐसे ही नंबर आता ही रहेगा उसका। ये कुछ tweet number 4296. I mean, who the hell bloody cares? Who cares? Who is cataloging their tweets? ये बुक लिखेगा ना इसकी आत्मा। I mean, ये he's an unofficial, उसने मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंसेस कर रखा है, उसने कहीं बेकार सा कोई डिग्री कर रखा है, और वो लाइब्रेरी साइंसेस का डिग्री यहाँ पे लगा रहा है because he was too unintelligent to do any real degree. He did some library sciences ka degree. I don't want to denigrate library sciences. I know, library. But I have no other explanation for why he's cataloging his own tweets. So this is Ashish ji, yeah, इसके बारे में भी बात करना पड़ेगा, but I do a little bit of another level of insecurities in life. कोई हमें भूल न जाए। He is releasing the most controversial biography. Attention freaker. किसका मालूम है? Producer, writer, guess कर। I mean, this is KRK. I heard about this a few weeks back that KRK got Amitabh Bachchan to release his book. Seriously. I mean, I have to wonder what was going through Amitabh Bachchan's head when he was standing there with the book like this in front of the cameras.
नहीं desperate, I literally डिक्शनरी में वो अर्बन स्लैंग urban-dictionary.com या कुछ है ना, वो उसमें लगाना पड़ेगा desperation. अमिताभ मीनिंग क्या है? अमिताभ बच्चन रिलीजिंग KR के बायो. इतना desperate. You never know पीछे क्या डील हुई रहेगी. इस लेवल पे गिरने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी डील होती होंगी. I know. I mean, but how much money is enough to make you sort of descend to this level? नहीं, इनके लिए तो इनफ वर्ड ही नहीं है इनकी डिक्शनरी में. ये तो पूरा जू बाय कर चुके हैं आधा, लेकिन इनफ इज नॉट अ स्टोरी. नहीं, बच्चन थाली इतना बड़ा हो गया है, छेद से भी बड़ा हो गया है. मतलब छेद अभी इतना बड़ा हो जू गया में 6 बंगले तो इन्हीं के हैं, और कितना कैप्चर करेंगे. सो आजकल दीदी, हाँ, छोटे में तो वो छोटे में तो फेस ढक ढक के रखते हैं. 4 No, साल the के बाद other एकदम thing- से एक्सपोजर चालू हो जाता है इनका. Yeah, this reminds me, Shwetananda's daughter, yeah, Amitabh Bachchan's granddaughter, was Justice for his sister. Yeah. was hanging around with Shah Rukh Khan's son. I mean, Okay. these people, इन लोग को, I mean, क्या हो गया है? नहीं, और नहीं, पहले उस- तो फर्स्ट 2 साल तो बिल्कुल ही ढक ढक के रखेंगे. मजा ले, कोई पिक्चर भी ले ले, और फिर ये ऐसे तैमूर की तरह खुल खुल के निकलते हैं. फिर 4 साल बाद ये पता I नहीं mean, उसके बाद क्या हो जाता है इन्हें. जिहाद करने की जरूरत, इन लोग को लव जिहाद करने की जरूरत ही क्या है? ये लोग तो प्लेटर में आके लेके दे रहे हैं अपने ग्रैंड डॉटर्स एंड डॉटर्स को. भाषा को यदि आसानी से सीखना हो तो कविता द्वारा सीखो. सेल मोर बुक्स ऑफ हरिवंश राय बच्चन. इस घर को अपने आप को बेचना आता है बहुत अच्छे से. इस घर के हर व्यक्ति को मोनेटाइज एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, एवरीथिंग मोनेटाइज इट. और इसमें जो सो ब्यूटीफुल लिखते हैं ना, मुझे उनसे ज्यादा गुस्सा आती है. अरे इतना आपने बच्चों को कह दिया होता है कभी सो ब्यूटीफुल, दूसरे के बच्चे पे लगे पड़े. लेकिन किसी दिन अगर वो जो गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो भेजते हैं ना, उनको मैं यार किसी दिन यार मैं बता रहा हूँ, मैं किसी दिन पॉलिटिशियन अगर मैं बन गया ना, मैं बता रहा हूँ मैं पकड़ूंगा जो लोग गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप पे. पूरा इंडस्ट्री चला रखा है उन्होंने, गुड मॉर्निंग, क्रिएटिव वेज में गुड मॉर्निंग बोलना. नो कमेंट्स यार, बिकॉज अभी जो मेरे 2-3 मेरे फ्रेंड्स है वो देख रहे हूँ. ओके, सो ये दिस इज इंडियाज. आपको कुछ मतलब दिखाई नहीं देता होगा यहाँ पे, बट आप यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए. मैं जहाँ पे दिखा रही हूँ, इंडियाज फर्स्ट मार्शल आर्ट्स फिल्म. ओके, I mean, and it will not be about Kallari. It will be about some bloody. Anyway, Anuj ji, there are n number of Indian martial arts from which have come Chinese and other martial arts, but वो दिखाएंगे, हम शाओलिन का हम दिखाएंगे. I know. And Indo-Chinese, you are right on point. Look at this Indo-Chinese co-production, and this is a Telugu movie. Telugu movie. पैसा कहाँ से आया है? Zoom कीजिए और इंडो चाइनीज. राम गोपाल वर्मा सर, आप अनुज जी, आप राम गोपाल वर्मा के पास चले जाइए, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए बस. नहीं, ऐसे क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए श्री श्री पूज्य महात्मा राम गोपाल वर्मा. और वो जो कर रही है उसको, I mean, you don't need to wear a bikini to do martial arts. I mean, that is my question. I want a real martial arts guy to come and tell me. मुझे बताइए, ये कौन सा लेफ्ट साइड पे जो हो रहा है, ये कौन सा मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग हो रहा है? जरा बताइए. मेरे को डर है कि ये जुलाई 15 आ रहा है, पब्लिक भाग के मार्शल आर्ट सीखने के लिए चली ना जाए. ड्रैगन गर्ल. हाँ, these are all the teaser posters. I'm like यार कभी तो भगवान परशुराम पे एक पिक्चर बना दो यार. He invented martial arts. He gave the world martial arts. Oh wow, split cut. I missed it. वो YouTube पे वो compilation videos आते ना, people dying a little on the inside करके. I just died a little bit on the inside. I know, totally died यार. एक्शन तो नहीं लगता है ये कुछ और अलग ही किस्म का एक्शन लग रहा है सर अनुज जी. ये सिर्फ इतनी पिक्चर के लिए ही था बस. लड़की
ये क्या क्या न्यूज दिखाएंगे यार। और ये अच्छा वाला है, ठीक है। ये एक्चुअली रणबीर कपूर इज अटेंडिंग सम इवेंट एंड ये फ्लावर गाय को बुलाते हैं, रेंट करते हैं कि उस पे डालो फूल, ठीक है, इनवाइट करने के लिए। इसे साइड में देख, क्या रहा है कि उसी के लोग डाल रहे हैं क्या उस पे फूल? वो ब्लैक वाला मेरे ख्याल से सिक्योरिटी गार्ड है, ही इज ट्राइंग टू मेक स्पेस। या ये कितना फेक करते हैं यार। ये अपना ही मतलब I'm not ignoring Radheshyam ji. Oh my goodness. Okay, I'm not ignoring your comments. I read your comments. मैं फिर से I can even read them aloud. वरुण भाई, रूपल और रिचा हमेशा अपने लाइव प्रोग्राम पर आपको ट्रोल करते हैं और आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं। Okay, so Radheshyam ji, point noted. Varun also has थोड़ा तो क्रिटिकल थिंकिंग यूज करो। अब वो गलत शलत बोलते हैं, फिर उनको 1 घंटा अपने ही चैनल पे मतलब प्रोग्राम करने देते हैं। राधेश्याम जी, हम सब पागल हो गए, या तो मैं पागल हूँ या आप पागल हो, कौन पागल है यहाँ पे? राधेश्याम जी, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं। ये हमें डिसाइड करना है कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। Excellent. Radheshyam ji, please, thank you. Really appreciate your love and concern for Varun. But थोड़ा क्या कर रहे हैं ना, अभी थोड़ा फोकस रहने के लिए trying our best here. तो let's see. Absolutely, Ashish ji. Yeah, वो वही हो रहा है अभी, divide and rule, all kinds of all directions से. But yeah, ये पूरा बाल्टी उस पे I just felt it very funny. I mean, talk about efficiency. True efficiency. उसको काम बस करके निकलना है, बस कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेड कार्ड है इतने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए इतना पैसा है, उतना पैसा मिल गया, चलो फेंक के चलो। टॉयलेट का बाल्टी लग रहा है वो बेचारा। उसको ओमेगा 7 लेवल एफिशिएंसी रेटिंग है। I know. So I just wanted to talk about IFA because थोड़ा IFA के बारे में भी last 15 minutes we'll talk about IFA। यहाँ पे if you remember Gully Boy, the most famous movie in the world, Gully Boy को फिल्म फेयर जूरी ने कितना आफ्ताब शिवदसानी सम्मान, नहीं, this is a meme. No, but this is आफ्ताब शिवदसानी on the side. Yeah. इसको तो यार अरसा हो गया देखे हुए। ये बेचारे सब लोग मीम के ही लायक। He's like that. He's the Tiger Shroff of 2 decades back, minus the martial arts skills or the body, minus the leg splitting skills, but all the bad acting skills. नहीं, all the bad acting क्या यार, ये टाइगर श्रॉफ Tiger Shroff has become a meme. बच्ची हो क्या, वो उसी पर फंस गया है वो। तो तब क्या हुआ था, इतना पॉपुलैरिटी हो गया था, बस which was used in Gully Boy was also awarded Filmfare for the best bus in India. So that is very self-congratulatory. These people are very self-congratulatory. I think last time we were talking, right? कृति सेनन को जो अवार्ड मिला था वो क्या था? Nothing to hide. हाँ, nothing to hide. Seriously. Nothing to hide. वो जो एक अभी न्यूज में आई है ना कि there is one woman in Vadodara who's marrying herself. It's basically that on an industrial scale. मैं तो पूछना चाहती थी कृति सेनन से, Are you sure there is nothing to hide? So यहाँ पे अंकल जी आते हैं बेटे को आईफा अवार्ड देने के लिए, बेस्ट डेब्यूटेंट। Like Sunil Shetty has come to give his that's his nephew. उसका बेटा है। Nobody even knew that he has a son, and he actually had a movie also until this award was given. I think even he didn't know that he had a son until this award had to be given.
I know. कौन It सी is. मूवी में आए ये भी पता नहीं है हमें. डेब्यूटेंट अवार्ड पहले मिल गया. एक सेकंड ये यार, आजकल ये दूसरे लोग जो प्रियंका के मतलब कॉपी किए बिना मानेंगे नहीं. लाल साड़ी लाल लहंगा ही पहनना है इनने. रचना जी, आप ये बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट लाए हो. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, आई मीन रोबोटिक्स के डिग्री के बाद आपने कभी सोचा था कि आप ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव बॉलीवुड के बारे में लिस्ट बनाओगे ऑन अ वीकली और अ मंथली बेसिस? नहीं, sorry, one second, I'm looking for, I'm trying to answer your thing and also look for Sunil Shetty ka. कहाँ पे I had another one where they're hugging each other and he's just so proud of his son for the best debutante award and all that blah blah blah, but अभी दिख नहीं रहा है. आई थिंक मेरे क्वेश्चन और आप जो करने की कोशिश कर रहे हो उसमें कोड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपका. Not enough RAM. Not enough RAM to process. I know. So I'll tell you like how I'm ignoring your question. Let me show you. Mia का एक बार देख लेते हैं. Being Virgin. The name of the movie I'm showing you guys. Welcome to Coffee. The name of the movie I'm showing you guys is called Being Virgin. Okay. I'm sorry. Welcome to Coffee with Thank you, Karan. Sorry. Being Virgin. Because Salman Khan is our best version that is available, right? So, Welcome to Coffee with Thank you, Karan. Thank you. It's taken me many years to get you on this couch. Why have you resisted coming? Yeah, Karan, because the kind of question that you asked, they get too. वो पूछता है first question कि why did you not come on to my couch till now? That is the question, okay? Welcome to Coffee with Thank you, Karan. Thank you. It's taken me many years to get you on this couch. Why have you resisted coming? Yeah, Karan, because the kind of question that you asked, they get too personal and I'm shy and I'm very uncomfortable with, Are you really dating this girl everyone's talking about? So I'll tell you, I'm not the nicest guy when it comes to relationships. Are you avoiding that question? No, not really. Okay. I'm just not answering it. Okay. So I'm not the nicest guy when it comes to relationships. Why do you say that? Because you had some very serious relationships. Yeah, but I was not very good with them. Okay. Yeah. It was good to other people at that time. Error 404 file not found. I know, 404 error. He says कि it seems he was not nice with the people that he was dating, and then उसका भाई बोलता है कि he was good with other people while he was dating these people. I was not very good with them. Okay. Yeah. It was good to other people at that time. What is your take about being private about your personal life? Whenever you've dated a girl, you never really come out and say, Technically, I've never. ये लोग अपना सारी चीजें कबूल करते रहते हैं बैठे. Exactly. I mean, they don't really hide anything. Absolutely not. And look at him. He's talking about his sugar. क्योंकि उनको कोई डर नहीं है, तो आराम से बोल रहे हैं हाँ नहीं थे अच्छे हम नहीं थे लो. Exactly. And they're getting away with it for such a long time. And he says, abhi dekho, he's talking about his sugar. He'll talk about his suhagra. About your personal life. Whenever you've dated a girl, you never really come out and said it openly. Technically, I've never broken up with anybody because I've never had a girlfriend. You've stayed with I'm going to save myself for the one I get married to. You want to save yourself? Are you saying you're a virgin? Even Karan John is laughing at it. I mean, I've had friends, but without benefits. I will get married and then benefits. Then not be a virgin. Suhagrat obviously तब होगी क्या? या मैं पागल हूँ या वो पागल है, कौन पागल है यहाँ पे? It seems शादी होने के बाद then he'll stop being a virgin because सुहागरात होगा. That's why. तो कितना talented है यार हमारे दादाजी लोग. Just amazing. So Daadaji, did you just say Daadaji लोग? Sorry, I got that joke late. I'm sorry, I got that. नहीं, that's okay. ये दादाजी ही तो है because if you see दादाजी का एपिसोड अभी आएगा. मिया करके इसका नाम है मिया because मिया is full of shit like this. आजकल मिया is very busy because इनको पैसे कहीं से भी मिले वो कर लेता है एडवर्टाइजमेंट. मेरे जवान भाई है रेडी it seems. यार ये एक सेकंड. मेरा जवान भाई है रेडी एंड आई एम SRK का भी प्रोमो कर लिया. प्रीति जी लेफ्ट क्या? Yeah. I think her audio was giving some issues.
I just saw it. Yeah, I can see her. So this is the Atli 47 is the producer guy, it seems, and the way Salman supports Shah Rukh Khan is beyond words. क्या बात. Okay, heart emoji, heart emoji, heart emoji. बॉलीवुड के दो शान, एक सलमान, दूसरा शाहरुख. I mean, it doesn't really have any value if a Muslim says that. I mean, if a Muslim is saying that, I mean, okay, fine. He's like, तुम्हारे बिरादरी का है तो ठीक है, चलो बोलना है तो बोलो. Words don't really cost money. नहीं, बुढ़ा हो गया, 72 का है वो बात. और नाम क्या रखा, बैड एस बिहारी. He is truly a bad ass Bihari. Can I have the link? One second. Truly bad ass, like living up to his name. 72, बेचारा 72 तो नहीं है. वो बोलता ना giga chad. I know. Oh my gosh, खान सिर्फ को प्रमोट करता है, blah blah blah. Okay, वो हो गया. So दादाजी, दूसरे दादाजी के बारे में आते हैं, बिकॉज ये मियाँ के बारे में तो हर रोज हर एपिसोड में बोलते हैं यार हम लोग. ठीक है, इतना भीख मंगा भाई है ये. यार तुम इतना करण जो दिखाई, मेरा फोन लोड नहीं ले पाया बेचारा, मर गया. ये must be like really late. आप इंडिया में हो ना अभी? आपके लिए तो बहुत लेट हो रहा होगा. आप इंडिया में हो क्या? हाँ. तो आपके लिए तो लेट हो रहा होगा अभी. तो यहाँ पे ठीक है, सब कुछ जायज है सुशांत के साथ. आजकल अम्मा लोग बहुत एक्सक्यूज मार रही है. सुशांत के लिए सब जाया है. doing all the things that say for Sushant. we have to for sushi. This is for sushi. This is. अच्छा, वो अभी सुशी हो गया है. Sushi. नहीं, उनके sisters will come after us if we, it is their own sushi, but we are just like, we feel like we हो सकते हैं, हमारे लिए वो सुशी भी नहीं हो सकता. I know. So here, so सलमान के बहुत ही जबरदस्त फैंस, ठीक है. It seems वो सब लोग अपने लड़कियों के साथ आ सकते हैं, but टाइगर अकेला आएगा, ठीक है. टाइगर अकेला ही आएगा ना, क्योंकि दोनों की दो टाइग्रेस दोनों आ गई हैं उसकी पहले ही वहीं. दादाजी आपकी पतलून फटी है. कैटू भी वही है, ऐशू भी वही है. Why he need to bring more? नहीं, तूफान. और जैकू भी तो होगी वहाँ पे. He's literally walking like he has spines. I'm not joking. This is like a serious comment. I hope he's seeing this video and then he gets medical treatment. There is some kind of problem in the way he's walking. Yes, I think the syndrome is called jahalat. मुझे वो हमेशा ही ड्रंक लगता है. उसकी वैसे तो भाई जाहिल है, लेकिन अभी यहाँ पे सिविलाइज होने की एक्टिंग कर रहे हैं. I know. Seriously. I think this is a line that applies to all. I know, yaar. इसका I don't know if you guys have noticed. I don't know if you guys have noticed इसका attitude with this fan who brings a picture of Salma and himself. Salma and Salman Khan, his mom and him, and he's a fan. He wants a picture. ठीक है, and this guy is going to IFA. इतना attitude. Last week this loser was trolled so badly because he treated him like dirt. This guy, it's just so sad to see that video. I mean, to be fair to Salman Khan, and it's not a sentence I ever thought I would say. If somebody comes up to you who is your fan, this is like the epitome of like a parasocial relationship. What the hell business do you have having a picture of me and my mom? It is parasocial, yeah, but at least when somebody is coming, parasocial means one way, right? Love that the other person does not even know that the person who is loving you exists. There is also a social separation that you have no way of living in that kind of social circle also.
Right, but फिर भी भाई, okay, if somebody comes and says कि it is impossible to not love a person that says he loves you or she loves you. It is impossible. Like you might love people and you might hate, but it is impossible to ignore people who say you. And यहाँ पे ये बच्चा आके बोल रहा है कि भाई भाई मेरे साथ एक फोटो खींचो and all that. And इसका घमंड देखो, कितना attitude है अंकल का. I in this sort of situation when I don't really blame, because बाबा से भाई. पर ये देखने के बाद बच्चे को और बच्चों का वीडियो देखने वाले बच्चों को समझ में आया. Hopefully. I mean, but like people who are like stuck in this like fan culture, it's like that's also quite a pathetic thing, and they do a lot of things like first of all these photographers and all, paparazzi and all, look, it's like a very depraved kind of thing that vultures. It's almost like as if they're vultures who are hanging around. So I mean, not to give Salman Khan a break, but I think I can sort of understand why he did that. I will not give him a break. चुलमन के जो बॉडीगार्ड है उसको भी बहुत चर्बी है. जब लेडीज लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं ना, तो तब I can feel it in my soul, the damage being done. प्रीति मार डाला. So I mean, I can when women start making fun of men. ना उसकी, ना हाथ खोलने वाले की, और ना ही कान उठाने वाले की, कभी भी नहीं थी. नहीं, वो नहीं कह रहा, लेकिन but when women start making on a mass scale, women start making fun of men, no, I mean तब I can feel it in my soul कि अरे ये तो बहुत ज्यादा डैमेज हो. वो होता है ना मॉर्टल कॉम्बैट में fatality. No, see यार तो अभी पर्सनल मत लो. हमारा मिशन इज लाइक ये दादाजी, we cannot like हम लोग सब मिलके इनका करना पड़ेगा, इज्जत उतारना. पहले तो पतलून तो सील ले, फिर तो घमंड उतरेगा. Exactly. नहीं मजी, yeah. So okay, the arrogance too much. Yeah, I know. वो जली तो थी उसकी जब एयरपोर्ट पे वो पुलिस वाले ने रोका था, उसको याद है कितनी उसकी लग गई थी मिर्ची. Yeah. One second, let me do some more. Okay, so दादाजी के पास आजकल एक नई दीदी आई है. Suntem în vinerea mare astăzi. Da, Lulia. Paștele toți creștinii ortodoxi. ये क्या खाली बोल रहे हैं क्या? ये पता नहीं, कुछ रशियन या कुछ तो भी बुलशिट है, बट वो कोरोना का जो फर्स्ट ईयर था ना, उसमें शी वाज डूइंग सम गूगल वीडियोस कर रही थी वो अपने कंट्री के लोगों के लिए, शायद कुछ इंटरव्यू कर रही थी, एंड ही केम फ्रॉम द बैक. शी डिडंट लाइक दैट. ओके, दिस इज 2 years old. हाँ, 2020 का था ये. बेसिकली दादाजी थे ना अपने कोरोना. उसने बोला तुमने हिजाब नहीं पहना, तुमने बुर्का नहीं पहना. भाई बोल रहा है बुर्का पहनने के लिए, तुमने बुर्का नहीं पहना. इसका I was like researching about this दीदी and TV host and singer. Okay. इन्होंने 1-2 पिक्चरों में गाने भी गाए हैं वो हिमेश रेशमिया के साथ. ये भिकमंगा गोरापंती लेके वो सर्बिया ईस्टर्न यूरोप से आके दौड़ के यहाँ पे दीदी आ जाते हैं. एंड भिकमंगा गोरा. अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता कि साइबेरिया गोरों में भी कास्ट सिस्टम हो गया है. फार्म हाउस में एंट्री कैसे मिल जाती है यार? अब गोरों में भी कास्ट सिस्टम हो गया अभी. ये साड़ी पहन के क्या है, ये 50 साल की क्या कर रही है? I don't know what she wants. Wearing a beautiful sari, it seems. And see, the thing is that these were tricks that used to work in the past. Yeah. One second, I'll just be back. Yeah. इन लोगों को फार्म हाउस में डायरेक्ट एंट्री कैसे मिलती है यार? मेरे को तो वो जानना है. हाँ, फार्म हाउस में डायरेक्ट एंट्री नहीं है, पैरों से नहीं. ओके कुछ ज्यादा हो गया. कभी इंडस्ट्री में दिखी नहीं वो पर्सन एंड डायरेक्टली फार्म हाउस में दिखती है, तो आई एम वेरी सरप्राइज कि ये वीआईपी ट्रीटमेंट कहाँ से टिकट मिला इसको. आई नो. ये उसका फेक मत बोलिए. हिमेश रेशमिया के साथ गाना गाया है उसने.
I know. No, she went one to really woolly. What is his name? क्या है इसका? हाँ? जो भी तुम बोलना चाहो, मैं तो लुल्ली One. लुलिया बोलती हूँ उसे. Okay, one to really something like that. These are उसका नाम. actually these tricks used to work in the past. That Yeah. हाँ, थोड़ा साड़ी वाड़ी पहना लो, इंडियन ड्रेस में फोटोग्राफ ले लो, Yeah. विदेशी को लेके आ जाओ, सब खुश हो जाएंगे, गोरी है खुश हो जाएंगे. ये डेफिनेटली जैकू की This is दोस्त not going होगी. to work anymore. This doesn't to the extent that I hadn't even heard of this woman. Yeah, same. आपने नहीं हेयर किया तभी तो डायरेक्ट फार्म हाउस में गई हो. I mean, ऐसी लोगों को वीआईपी एंट्री मिलती है. So यहाँ पे pharma correction. ओहो, अनन्या पांडे द स्ट्रगलर, उसके फादर बड़े स्ट्रगलर थे, मुझे याद है. बहुत एग्जैक्टली. एंड ये दीदी को याद रखिए, दिव्या खोसला है इसका नाम, इट सीम्स. एंड दिस दीदी को याद रखिए बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट हर. बट दिस लूजर अंकल इज एक्चुअली सो रूड. एक बार सुनिए. Line up. Ladies and gentlemen, now I would like all of you to give a pose with the IFA Diamond Trophy. Ladies and gentlemen, here you दिव्या खोसला वही है ना जो दिव्या भारती की जिसने सीट एक्सचेंज की है. Is she the one? Divya Khosla is, I think, she's Gulshan Kumar's sister-in-law. वही है, right? दिव्या भारती की सीट लेने वाली. I think so. नहीं. Divya Bharti was Sajid Nadiadwala's. Oh. वो Nadiadwala की. I don't know who the heck she is, honestly. But look at Daadaji's expressions यहाँ पे. He says, "Shut up and be quiet" to Siddharth Kanal. Okay, वो another चमचागिरी of Bollywood करता रहता है. keep quiet. He's bored us to death. Keep quiet. He has bored us to death. He's saying that to the anchor of IFA. He's saying that to the host of the IFA Awards. इसका तो इतना is just so full of shit, na? This guy. He has insulted Siddharth Kanal, but So you can see the comments and everything, as you can see. Sallu bhai, it seems, and kya blah 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 has too much struggle there. Not a brand, blah blah blah. Okay, whatever. So I just wanted to show that quickly. But एक second, one more thing I have to show. Yeah, please, any comments? You're welcome to talk while I mean, he can talk like this because you have to have tremendous confidence in the leverage you have in the industry. I mean, you have to believe that you own the industry to behave like that. Exactly. थक गया, मतलब पूरा थक गया. It's just he's not these basically he's barely a human being at this point. Yeah, exactly. And I'm being kind. Yeah, exactly. Hey, as of now, he's more accomplished than I am. That is out of the question. He has accomplished more in life than I am. But the point of the matter is that it's also important that how you have achieved. Exactly. How you have achieved your struggle. Yeah. Divya Khosla ji, what she said 10 years ago, and now what she's doing at IFA with Uncle Ji, we'll see. I think सलमान के साथ कौन काम नहीं करना चाहता, because I'm a big fan of सलमान. मुझे याद है when I was a young girl, तो मेरे रूम में मैंने सलमान खान का पोस्टर लगाया हुआ था, and मुझे बहुत डांट पड़ती थी मेरे पापा से because of that poster. So yeah, but I think every girl is Salman Khan's fan in this country. Before I go into the technology world of IFA, I just want to take a moment on behalf of all of the IFA management to thank our partners, Miral and DCT, who have been wonderful partners. Gulshan Kumar's daughter-in-law or sister-in-law? Gulshan Kumar बुढ़ा है ना यार वो.
भूषण, हाँ, तो भूषण उसका बेटा है या भाई है? छोटा भाई है या बेटा है? Wife of Bhushan. Okay, so daughter-in-law. Yeah, so correct, right? So Gulshan Kumar's son is probably Bhushan, and Bhushan's wife is this. So T series guy, right? वो उसका. She's already married. Wow. Okay. Yeah. So even if she's already, I mean, this photograph, this video is latest, right? Yeah. अभी का है. Yeah. So what is she doing? I mean, I उसका body language थोड़ा off नहीं लग रहा आप लोगों को? Exactly. I think press conference है IFA की. Yeah, something like that. I mean, she's behaving like a little girl. चुलमा मिल गया ना जिसका पोस्टर बेडरूम में था. हाँ, like even if your poster was in the bedroom, but like कुछ तो you're married now. I mean, would it wouldn't even look good on men if it was the reverse. If there was an actress sitting there and exactly. Some man, Can you imagine? Exactly. Can you imagine? Of course, वो double standards के बारे में बात करेंगे. मैं double standard की तो बात ही नहीं कर रहा. मैं बोल रहा हूँ कि even if it was acceptable, मैं बोल रहा हूँ कि it wouldn't look good if you're a married man and you are like fawning over this actress. पर सर यही तो वेस्टर्न कल्चर दिखाते हैं वो हमें. Exactly. कि this is okay. पुनीता जी मैं इग्नोर. सोच छोटी है हमारी नहीं, यही तो वो दिखाते हैं हम. Exactly. That we are so cool. हमारी आगे की जनरेशन बोलती है हमें कि हमारी सोच छोटी है, उनसे देखिए. So imagine what kind of respect she has for Bhushan Kumar. वो तो भूषण ही बता सकते. So one second. This is the last video I'll play, but before that, Punita ji, I'm not ignoring your comment. I just read it. अंदर में पढ़ ली मैं. So yeah, बिल्कुल FCRA should be demolished. FCRA. What? Why? That is the law that is getting all these people into trouble. Why do you want to demolish the law that is getting these people into trouble? Oh. Are you getting into trouble because of FCRA? नहीं प्रमोद मानुस मारे. Okay, उनसे बात कर रहा हूँ मैं. प्रमोद जी से बात कर रहा हूँ मैं. Yeah. प्रमोद जी, आपको क्या दुश्मनी है FCRA से? FCRA is a beautiful law. It should be in fact made more. Gloria ji, welcome ma'am. बेटा. Okay. I think बेटा है वो भूषण. Yeah. गुलशन मर गया. I know देवेंद्र जी. I mean, sun is rising in the east. Water is wet. Yeah, I know that. So I just want to show you the super uber talented Nepo product of our Telugu industry, the one and only Mahesh Babu. Okay, so before I play this video, anybody? ये किसका बेटा है? ये कृष्णा करके. I used to do mimicry Krishna dance. One second. यार कृष्णा dance अभी नहीं, बाद में full feature करेंगे कृष्णा dance. अच्छा रचना जी, आप robotics भी करते हो, coding भी करते हो, education भी करते हो, आप mimicry भी करते हो. I used to. और फिर आप Bollywood की list भी बनाते हो अभी. नहीं. These are all like gigs that I need to get my mind off. But instead of going to succeed on movie. Absolutely. Thank you, Gloria ji. Just going to wrap up superstar Krishna's son. Yes, Sri Kacha. I always used to read it Sri Racha. Sorry. Bhushan is the same name here in trouble. Yeah. I remember. I think now I am able to connect some dots. Okay, so any closing comments, guys? Any closing comments? आज का अर्जुन प्रीति, anything? दादाजी इसको boycott करना ही पड़ेगा. Otherwise, what else? I mean, क्या अब जो बोलना था तो बोल दिया. Nepotism. I would say just boycott these people in general. I mean, one more thing. If you can boycott Doctor Strange का जो नया मूवी आया ना,
boycott it. It's like an entirely colonial movie. It is. उसमें मैं देख रहा था मैं I made a mistake going and watching that movie. उसमें they have just trashed, just they have taken our own हमारे philosophical concepts and just subverted it into something negative. I mean, it's terrible. Oh my gosh. Okay. I mean, watch it. If you watch it for the subtext, like what is implied. Yeah. Exactly. No, Pramodji, lot of things with Didi, Fekta Didi are happening. We have to keep an eye on her as well. Preeti, yes, ma'am. Yeah. Go ahead. Nothing. Yeah, just keep boycott movies. And another thing, they are making money on advertisement. Hit the brands. Keep telling them what you don't like to see. Because आपके जो products आप खरीदते हैं, चाहे वो A to Z कोई भी हो, जिसमें ये faces दिखाई देते हैं, उनका उस प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग बनता है उसमें काफ़ी कुछ पैसा इनकी जेब में जा रहा है. हो सकता है एक नॉर्मल फेस दिख जाए जिसे छोटी मोटी सैलरी मिल जाए और आपके प्रोडक्ट का पैसा भी कम हो जाए. हमेशा याद रखिए, पार्ले जी आपको आज भी 20 रुपए में मिलता है बिकॉज उसमें शाहरुख खान नहीं है. प्लीज़ हिट द ब्रांड्स कि आपको ये फेस नहीं देखने हैं. आप लोग फिर भी पार्ले जी खाते हैं, आप लोग फिर भी अमूल का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें शाहरुख और आलिया भट्ट नहीं दिखते. तो प्लीज़ ब्रांड्स को हिट कीजिए. हमें वो फेस नहीं देखने. शायद हो सकता है आपके प्रोडक्ट का 4 रुपये कम हो जाए, आपकी पॉकेट के लिए अच्छा है. तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि वहाँ भी उनको हिट कर सकें. एक ब्रांड हिट होगा, 4 अपने आप पीछे आएंगे. बट सिर्फ एक ही बात है, एक बड़ा ब्रांड हिट कीजिए, डेफिनेटली 4 अपने आप सोचेंगे, जैसे मूवीज में हो रहा है. सो प्लीज इसके बारे में जरूर सोचिए. थैंक यू. And the boycott movement is successful. बहुत नुकसान हो गया इन लोगों को. नहीं होना भी चाहिए, कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारी जॉब्स ली हैं. जो अपने निरमा प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, बैठ के कोको कोला बेच रहे हैं. देवेंद्र जी, ये अंकल आंटी. Okay, so this is just to wrap up. ये दीदी का कल शादी हुआ है, and she is Nayanthara, and she has married her. She's a South Indian, supposedly one of the most desirable women in South India and all that. ये दीदी. But isn't she a Christian? She's a Christian, yeah. I don't know if she has converted now to Hindu, or I don't know if that is possible. No. Oh, Christian है. We are all dirty brown people. Why will a pure Christian person convert to dirty pagan? हम तो जाहिल लोग हैं ना उनके लिए. But Didi has married him, and they just Uska, I just want to show the post of this uncle who is just head over heels over. कहाँ पे है यार? Okay. इसका एक famous scene है from some movie where she was cast as the Devi Durga. Devi Durga said, "Don't say anything bad about Jesus. Jesus is my brother." किससे बुलवा रही है? देवी दुर्गा से. I think I remember you telling us last time. I remember that. Yeah. I'm. So this girl, it seems, from Nayan ma'am to Kadambari to Tangamai to my baby to my Uyir and also my Kanmani and now my wife. There are 15,000 emojis. उसका शादी होके 2 मिनट हुआ है जब ये पोस्ट किया. तो आई डोंट नो कि इसका सोशल मीडिया मैनेजर है कि वो खुद लिखा है, पता नहीं है. बट इट इज सो स्केरी एंड क्रीपी. अंकल का नाम क्या है? अंकल का नाम विघ्नेश शिवन. अच्छा. एंड अंकल ऐसा दिखता है, बट अंकल बहुत जल्दी विक्टर शिवन हो जाएंगे. और उनके बच्चे भी विक्टर शिवन एंड विक्टर 2 शिवन, द सीक्वल. सो दिस इज ये थोड़ा साउथ इंडिया में भी आ गया है. एंड ये विकट की शादी हो गई है, कटरीना की शादी, तब से पूरा देवेंद्र जी, सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर कमेंट. है ही नहीं. इससे पता चलता है कि हाउ रोबोटिक वी आर. अपनी कोई सोच नहीं, अपनी कोई पसंद नहीं है, सबने प्रियंका चोपड़ा ही बनना है. छी अनुज जी फॉलो दीदिया बट बॉयकॉट बॉलीवुड. अनुज जी, Anuj ji is always like that, naughty uncle. Okay, so yeah, I want to show another naughty uncle यहाँ पे. No Sushant, no Bollywood. Well said, ma'am. Thank you, Preeti. Thank you, Preeti. Thank you.
जुकाम हो गया है. हाँ. SSR stress is killing me. No. See, it cannot, sir. We have to sustain ourselves like this. So that is why I use comedy. आपसे सीखा सर. So much. Start हो गया video. Sorry. So yeah. So Electronic comedy. malfunction. I know. Comedy is something that will sustain us. So please don't stress out. It's going to happen. We just have to sustain ourselves. Okay. So thank you guys. Thank you everyone. Ashka, Arjun, and Okay. Then marriages are all our businesses. Absolutely. और कोई काम नहीं हमें. दीदी और इज इसीलिए फुल. तो जीते हैं. यहाँ से यहाँ तक ढक के पूरा. शी इज ऑलवेज लाइक और सोना सेमाई बुर्का. खरीदो और सहना गहना खरीदो करके. शी इज लाइक थैंक यू सिमी रमन जी का देख रहा है. हाँ हम लोग देख रहे हैं. सब पूरा देख सकते हो तुम. हमीशा पटेल का और महेश बाबू का. 2 मिनट रुकिए. ओके. अच्छा, हमीशा पटेल. हमीशा पटेल. Talk about a blast from the past. क्या सोच रहे हो? खेलो ना. रहा नहीं जाता. यही खेल है. What with you? With you? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता. तुम कुछ भी नहीं जानते हो. बुद्धू. ये क्या है? अब तो तुम पर भरोसा नहीं कर सकती. कोई फायदा नहीं. घोड़े की सवारी हो. This is painful. This is cringe and this is painful. उल्टी आ रही है. So gross. So gross. It is so gross. Can you imagine the scarred minds of girls and guys who are going to get married? The pressure and like what is it? What is this? Justice for SSR, oath for Sushant. I mean, justice का SSR यहीं पे भस्म हो गया. इस वीडियो के वजह से. This video is responsible for destroying justice for SSR. But we are not going to allow that to happen. Send you some video to call Shilpa. Call Shilpa? Why? क्यों माहौल खराब कर रहे हो आप? इतना अच्छा सेशन था, माहौल खराब कर रहे हो आप. No, she's just joking. Okay. No, thank you. This is, so I just want to end with this. So thank you guys. Thank you everyone for your time. Really, it's very late in India. Really appreciate that. Last season finale with our Thai. We'll do something. I'll try my best. After that, I'm taking a break until August 1st. So please, I'll be saving a lot of your time. So that's why I'm happy. But I'm sad that I won't be hanging out with you. Thank you. Wow, sometimes cringe is also awesome. Bye. Thank you. क्या सोच रहे हो? खेलो ना. रहा नहीं जाता. यही खेल है. What with you? With you? With you? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता. तुम कुछ भी नहीं जानते हो. बुद्धू. ये क्या है? अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती. कोई फायदा नहीं. घोड़े की सवारी हो. Thank you everyone. Thank you for all your wishes. Really appreciate that. I'll also miss this, but we'll come back bigger and better. Thank you. Bye. Love. So next week I'll try my best and then take a break. Okay. Bye.